Hello and welcome to the third class on agriculture in our GS3 means module. I hope you can see and hear me. If you can see and hear me, please write yes in the chat. Okay. Dr. Simran, Dr. Ankita, good to see so many doctors here. All right. So, just a few things. Thank you for your concern. Firstly, I'm doing okay. I'm good, and of course, this is not an easy time, but we also have to study alongside it. No, I'm okay. I'm physically तो 100% I'm okay. Mentally is ठीक है चल रहा है बस किसी तरह. All right. So let us now talk about everything that we have to discuss today. Okay. So far we have read about agriculture input. Yeah. So I think before I start the class, I should just address whatever has happened. Whatever happened in Rajendra Nagar was not okay. It was clearly not good, and I mean it was horrible. I also, when I went there and I stood there and I spoke to everyone, I felt it was it was horrible. I mean it is. I don't have any words to say what has happened there, and then of course बहुत और चीज़ों का भी गुस्सा है. That is not the only issue in that place. So I mean, even though this might sound counterintuitive, मैं तो यही बोलूँगा कि देखो, if you can study from your home, there is no better option than that. I have always been a student who studied from his home. मैं तो कभी एज अ स्टूडेंट नहीं आया राजेंद्र नगर, एंड सो आई डिडंट नो कि वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. when I went there, I learned that other than this, there are also issues of very high rent. The rooms are in pathetic condition. So many libraries are still running in the basements. And as you guys well know that we don't take any offline, like at least I don't take any offline class, right? ठीक है, आंसर राइटिंग होती है वो अलग बात है, but as such I have never taken a class offline. And of course देखो, from a teacher standpoint it feels good to take an offline class because आपके सामने लोग होते हैं, but it cannot come at the cost of safety. So मेरी तो यही advice है that if you can study from your home, you should study from your home. And मैंने हमेशा अपने घर से ही पढ़ाई करी है, एंड ऐसा वहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं. लाइक ऑफ कोर्स इफ यू आर इन एन ऑफलाइन क्लास, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन ensure that you are studying well, and I can ensure कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ आ रहा है. You can ask your doubts directly, you can stop me in the middle. And घर पे रहने में अपनी loneliness भी होती है. You feel lonely कि यार आसपास कोई नहीं है. ऑफलाइन में there is a cohort, there is a group. But ये advantages ना बहुत marginal हैं. And honestly speaking, even after going to Labasna and meeting almost everyone who was selected in my batch, very few people were coming directly from ORN. तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप घर पे रह के नहीं कर सकते. So if you want to stay home and study, that would be my advice to you. Because देखो, everywhere in economics, आज भी हम समझेंगे, everywhere in economics or everywhere in the world, it is a demand supply game. जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे वहाँ रूम्स की डिमांड शायद ज़्यादा है, तो वहाँ प्राइसेस भी ज़्यादा हैं. तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे विच दैट प्लेस ऑफर्स. एंड अगर हम उसके डिसएडवांटेजेस देखें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. देयर इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू बी मेड दैट व्हेन वी स्टे एट होम देयर आर सो मेनी अदर एडवांटेजेस. आप अगर राजेंद्र नगर में बाहर निकलो, एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस इशू सिंस अ लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट कनेक्टेड टू व्हाट हैज हैपेंड राइट नाउ. अगर आप राजेंद्र नगर में बाहर निकलो, यूपीएससी इज इन योर फेस. मतलब आपको हर जगह यूपीएससी दिखता है. आप कहीं भी चले जाओ, बोर्ड्स, होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट, एवरीथिंग इज इन योर फेस, है ना. बट इतना जरूरी नहीं है यार. एग्जाम के अलावा भी और चीजें हैं. योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो सफर्स देयर. घर पे रह के अगर पढ़ाई कर सकते हो तो करो. अब घर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हैं.
घर की प्रॉब्लम्स है कि हमारे पास कोहॉर्ट नहीं होता, देखने वाला कोई नहीं होता, हमारे पास एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं होता. बट वो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इंश्योर कर सकते हैं. दे कैन गिव अस गुड फूड, दे कैन गिव अस गुड सपोर्ट, दे कैन इंश्योर आर अकाउंटेबिलिटी कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं. आई नो वो फ्रीडम सीख करने की बहुत वो होती है, यू वांट टू सीक फ्रीडम कि यार मैं अकेले रहूंगा या खुल के रहूंगा. बट वो फ्रीडम सीख करना इज नॉट रियली द बेस्ट ऑप्शन, स्पेशली इन द स्टूडेंट टाइम. मैं भी अगर मुझसे अगर कोई पूछे, मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन व्हेन आई वाज इन अ रिलेशनशिप, दे न्यू अबाउट इट. सो मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल और बहुत सपोर्टिव हैं. बट मेरे को भी ये रहता है कि यार बाहर जाके थोड़ा खुल के रहते हैं, थोड़ा खाली रहते हैं. बट इट्स नॉट वर्थ इट, स्पेशली इफ इट्स एट द कॉस्ट ऑफ योर सेफ्टी. देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है. वी आर इन अ कंपेरेटिव एग्जाम एंड वी कांट, if so many people have the aspiration to clear the system, we cannot take that aspiration away, right? वो aspiration नहीं जा सकती है. बट उसको हम ऐसे ऑल्टर कर सकते हैं कि हमारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो. तो मेरा मैसेज यही है कि पहले तो इन योर डिसीजन मेकिंग, वेन एवर यू आर डिसाइडिंग कि मुझे यहाँ पढ़ना है या यहाँ जाना है, इस लाइब्रेरी में जाना है, एक्सेट्रा, सेफ्टी शुड बी अ वेरिएबल दैट यू शुड अकाउंट फॉर. For example, when I was in Gurgaon, I also used to study in a basement library, very similar to the one that is there जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है. वहाँ पर भी एक ही एंट्री थी, रोड से ही लिंक्ड थी वो लाइब्रेरी. वहाँ पे ये भी हो सकता था कि वहाँ फ्लड आती तो वहाँ भी पानी भर सकता था, right? So when I was looking at whatever had happened, it was very, I could think about that it just as easily could have been me 2 years back, है ना. तो I would just say कि whenever we are making this decision कि कहाँ रहना है, कैसे पढ़ना है, etc., safety should be a variable that we account for. It should not be कि यार ठीक है देखी जाएगी. मैंने भी नहीं किया अकाउंट. मैंने भी सोचा है घर के पास लाइब्रेरी है, यहाँ चले जाते हैं. घर के दूर एक और लाइब्रेरी थी which was better equipped. बाद में मैं वहां भी गया थोड़े टाइम. बट अगेन लगता है कि यार घर के सामने, घर के पास है, यहाँ चले जाते हैं. डेट सेफ्टी was not even a variable in my decision making. But let this incident be a constant reminder to us and we not forget that this variable of safety and security and also mental safety and security should be very high in our list. मेंटल सेफ्टी से ज्यादा और फिजिकल सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. एग्जाम तो आई थिंक उसके 10-12 प्लेस नीचे आता है. उसके बाद शायद आपकी फैमिली है और आप खुद हो. तो लेट्स कीप दैट एट आवर प्रायोरिटीज. एंड अगर घर से प्रिपेयर कर सकते हो तो घर से करो. और मैंने हमेशा घर से ही किया है, ठीक है. दैट डज नॉट मीन दैट लाइक ORN विल शट डाउन. वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि बिल्कुल बंद हो जाएगा वहां पे, सारी सब कुछ बंद हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होने वाला. बट आई डेफिनेटली थिंक इट नीड्स टू बी डीकंजेस्टेड. इतने लोगों को वहां रहने की जरूरत नहीं है. अगर आपको आना भी है ऑफलाइन पढ़ने के लिए, यू शुड कम फॉर अ टारगेटेड टाइम. आप आओ, आपका मेंस है, 3 महीने रुको, निकल जाओ. इससे ज्यादा वहां रुकने की जरूरत नहीं है. जो वहां क्रिटिसिज्म की बात है, देखो मतलब ऑब्वियसली इट अफेक्टेड मी एंड आई एम श्योर यू ऑल नो दैट इट डिड अफेक्ट मी. बट यार एक सिंपल सी बात ये भी है दैट अब मैं आपसे पूछता हूँ, वहां पर जो सिनेरियो था, जिस तरह की वीडियोस आ रही थी, और पता तो नहीं होता बाहर से, मैं तो आई वाज एट माय प्लेस. यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अब मैं जाके वापस आ गया और कुछ नहीं हुआ, वो बात की बात है. बट कैन यू से विद श्योरिटी दैट माय पर्सनल सेफ्टी वुड नॉट हैव बीन इम्पैक्टेड वहां जाके, कि वहां कुछ नहीं हो सकता था? ऐसा कुछ when I was going there, when I was making the decision to go there on Sunday, I was not sure. Actually, my parents only told me कि यार तू जा रहा है, वहां कुछ हो गया तो क्या करेगा? And that is why it took me so much time to get there. I came there at 3:30. I did not announce that I was there till 5:45 because I wanted to make sure that माहौल वहां पे ठीक है. And I was also fearing for my safety, but it was important to go. So anyway, that thing is done. I think मैं तो यही सोच के गया था कि आई विल नॉट टेक लीडरशिप ऑफ द प्रोटेस्ट. वहां जाके कई लोगों ने ये काम भी किया है कि वहां गए हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, पब्लिसिटी के लिए माइक उठा लिया. आई डिड नॉट पिक अप एनी माइक. आई डिड नॉट लीड द प्रोटेस्ट एनीवेयर. आई थॉट मुझे वहां जाना चाहिए, सॉलिडारिटी में बैठना चाहिए. दैट्स ऑल आई डिड. आई थिंक दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोबारा भी आई थिंक आई विल गो एटलीस्ट वंस मोर टू हेल्प एंड टू शो सॉलिडारिटी. दैट्स इट. मतलब मेरा
ऑनेस्टली देखा जाए, और वहां पर मुझे कई लोगों ने पूछा भी कि व्हाई डिड यू नॉट टेक अ लीडरशिप पोजीशन, सर आप लीड करो इस प्रोटेस्ट को. सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है that if it goes on to become a legal issue, the there will be an accusation that I am trying to fight my competitors, because they are technically our competitors, and I am not an aggrieved party, I am not a student. So it will be then further the issue will get commercialized. तो मेरा यही काम है कि मैं उसको सपोर्ट करूं. हाँ, सपोर्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, इसको रिफॉर्म करने में मैं जो भी हेल्प कर सकता हूं, आई एम विलिंग टू डू इट. And that's all I would like to say. हाँ, मतलब फ्लैग बेरर और आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं. इट वॉज सिंपली दैट आई हैड टू गो देयर एंड सिट. मैंने यही डिसाइड किया था. मे बी इट वॉज द रॉन्ग डिसीजन, आई डोंट नो, बट आस्क योर सेल्फ वॉट यू वुड डू इफ यू वर इन माई प्लेस. एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर, ऑनेस्टली नॉट श्योर. अब तो आई एम श्योर कि हाँ कुछ नहीं हुआ, मैं जाके आ गया वगैरह. बट कुड यू हैव सेड विद सर्टेनिटी कि मैं वहां जाता और कुछ नहीं होता, राइट? एनीवे, no, I know I am fair, 100%, Komal. I 100% agree. But just think about the fact. मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया. One day before, Atis sir had gone there, and उनके against नारे लगे थे. People were abusing his family, him, and everything. Maybe I don't know what he did. Maybe उन्होंने कुछ किया हो. I mean, I don't know what had happened. But वो देखने के बाद वहाँ जाना was difficult. That's all I'm saying. आया तो मैं फिर भी हूँ, and I will go again also. To show solidarity, I think it is my responsibility. I'm just telling you कि मैं जाऊंगा दोबारा भी, 100% जाऊंगा. मुझे वो नहीं है. I'm just telling you why it was difficult to make that decision. And अगर आप मेरी जगह होते, maybe आप भी शायद, you would have at least thought about it once. नहीं, I don't think I have done enough yet. I mean, I will 100% go again, maybe today, maybe tomorrow. But again, I will not announce it because PR स्टंट के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं. I will go again. मेरे हिसाब से मुझे जाना चाहिए. I will go to help just to ask and make sure that people are okay. This also I did not. अब आप लोगों को बता रहा हूँ because you are here in this live chat. I went to RML also. I went to RML to. I have juniors and friends in RML who are people who are of the medical fraternity. Friends कई वहाँ पर PG कर रहे हैं. एक दो juniors भी हैं जो वहाँ पे अपनी MBBS कर रहे हैं. मैं RML भी गया था. I thought because वहाँ पर ये बात चल रही थी that some people are still admitted in RML, so I thought I should go and ask. I went to RML, I asked, but they told me that everyone has been discharged. जो like unfortunately whoever has passed away, उनके अलावा जो लोग आए थे उनको उन्होंने treat किया, and they said that they are fine and they have been discharged. I went to RML, I came back then again to ORN on that very day. ये भी मैं कहीं I have not announced it publicly and I will not announce it publicly. ठीक है. मतलब वही है. इट्स नॉट मतलब if you चलो छोड़ो. I think we should stop this discussion and now let's talk about that the fact that we have to study also. I know it's difficult. अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, I completely understand. It is difficult for you to study. It is difficult for me to teach. Honestly, I am not in the right headspace to teach. But प्रॉब्लम वही है कि इट इज़ अ कंपेटिटिव स्पेस. एंड अगर अभी 2 महीने में मीन्स नहीं होता, 2 महीने भी नहीं है, अगर 2 महीने भी में मीन्स नहीं होता तो शायद मैं ये क्लास नहीं ले रहा होता. बट वो भी एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग वी हैव टू डू. सो वही आई विल ट्राई माई बेस्ट अगेन टू डू वट आई हैव टू. अगर इफ देर इज सम मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज इन एडवांस. All right.
No, I understand, Kirti. It was a big shock, and this is not okay. आई अंडरस्टैंड थोड़ा पढ़ना मुश्किल है इस टाइम पे, एंड अगर नहीं पढ़ा जा रहा, यू हैव माई फुल परमिशन टू एग्जिट दिस क्लास. आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो. अगर आप मेंस दे रहे हो, आई वुड रिकमेंड दैट थोड़ी एफर्ट करके पढ़ लो, नहीं तो यार हो जाती हैं चीज़ें कवर. दीज थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट, एंड मेंटल हेड स्पेस भी होनी चाहिए पढ़ने की. आई डोंट हैव अ चॉइस, यू डू. सो इफ यू आर अनेबल टू स्टडी, don't you can not watch this lecture, and that will also be okay. All right. So I'm just pausing for 1 minute. This pause for 1 minute. This pause for 1 minute is to uh, show solidarity and to give my condolences to the people who have passed away. Nobody deserves this, honestly. So I will just pause for 1 minute in silence, and after that we'll start. If you want to exit, that is completely up to you. I have a responsibility because mains is coming up. नहीं तो मैं ये नहीं कर रहा होता इस time पे. Anyway, I'll just pause for 1 minute, and then we'll start. Thank you. Again, I wish whoever has passed away in this horrible tragedy, they get the peace in heaven that they could not find here. Now let's get to the class. Again, I honestly am not in that headspace, but it is my responsibility, so I will continue. Yeah. Okay. So anyway, so far we were reading agriculture. In agriculture, we have read about certain inputs to agriculture. In inputs, we have studied land, we have studied water, we have studied fertilizers, we have studied technology. When we are studying agriculture in general, there are two other things that are directly in the syllabus. One is land reforms. This we have covered comprehensively. There is e-technology in the aid of farmers. This also we have covered comprehensively. In water, we have covered comprehensively the idea of water, even if it comes from a geography perspective, and we have linked it using the Mihir Shah committee report. And we have read this also in detail, and even the idea of water crisis, water use efficiency, etc., everything that could have been asked to us in geography, we have done that also. Now we will continue with the same approach. We will now continue with input management. So when we continue with whatever inputs are there in agriculture,
अब देखो, why are we reading these inputs in detail? Because if you think about it, हमारे syllabus में there are things like farm subsidies. There can be things like agrarian distress. There is an overarching issue of doubling farmers' income. तो वी कैन गेट अ क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऑन एन इनपुट. जैसे आज हम सीड्स पढ़ेंगे, जीएम क्रॉप्स पढ़ेंगे, तो हो सकता है हमें उस स्पेसिफिक इनपुट पे क्वेश्चन आ जाए. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट वी कैन गेट अ क्वेश्चन ब्रॉडली, like on agriculture in general. When we get a question on agriculture in general, if we have read everything in detail, we will have a lot of multi-dimensional points. Okay, now today in our inputs we are going to read, सबसे पहले we are going to read the issue of seeds, and it is nothing that you haven't read. It's about management of information. तो वही करेंगे, बताओगे आप और फिर मैं आपको बताऊंगा. So seeds, then we are going to read about pesticides. आज हम inputs खत्म करेंगे. Then आपने देखा होगा, शायद आपको याद होगा सिलेबस में, that there were two headings in the syllabus: technology missions and e-technology in the aid of farmers. हमने e-technology in the aid of farmers तो देख लिया, हमने टेक्नोलॉजी मिशंस नहीं देखा. तो ये जो टेक्नोलॉजी मिशंस वाला पर्पस है, यहां पर हम देखेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर R&D. देन एक और इनपुट होता है एग्रीकल्चर में कॉल्ड क्रेडिट. सो वी विल रीड अबाउट एग्रीकल्चर क्रेडिट इन डिटेल. एक और इनपुट होता है एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट. सो वी विल रीड अबाउट इन्वेस्टमेंट इन डिटेल. एक और इनपुट होता है यहाँ पर सब्सिडीज. तो थोड़ा बहुत हम सब्सिडीज के बारे में पढ़ेंगे, ऑल्दो विल रीड अबाउट इट मोर व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट क्लास, व्हेन वी टॉक ऑफ APMCs एंड MSP एंड व्हाट नॉट. एक और इनपुट यहाँ पर होता है इंश्योरेंस. सो वी आर गोइंग टू रीड इंश्योरेंस आल्सो. व्हेन वी आर रीडिंग द इशू ऑफ सीड्स, यहीं पे ही हम लिंक करके साइंस एंड टेक का भी टॉपिक आप इसको कह सकते हो, एग्रीकल्चर का भी कह सकते हो. वी आर गोइंग टू रीड GM क्रॉप्स आल्सो. सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेस क्लास. ठीक है, और हम इसी ऑर्डर में चलेंगे. आई होप आप बाकी चीजों से रिलेट कर पाओ. एंड इन द एंड ऑफ द क्लास आई विल आस्क यू टू राइट वन आंसर, एंड दैट विल चेक कि आपने अभी तक कितनी पढ़ाई करी है. ठीक है, ऑलराइट. हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे एक आंसर लाइव इन द क्लास. ठीक है, और उससे इट विल नॉट बी ऑन एनी स्पेसिफिक थिंग. वी विल सी हमारी थिंकिंग पैटर्न वहां पर कैसी रहती है. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद सीड्स, द इशू ऑफ सीड्स इन एग्रीकल्चर. अब अगर मुझे सीड्स पढ़ना है, पहले लेट मी रीड सम डेटा विद रिगार्ड्स टू सीड्स. जितना डेटा मैं आपको दे रहा हूं, इट इज कमिंग ओनली फ्रॉम 2 or 3 सोर्सेज. अगर कहीं और से होगा तो मैं बता दूंगा. One is the Ashok Dalwai panel on doubling farmers' income. They have submitted a 3,000 page report approximately. उससे जितना extraction है वो है. And then the next is the economic survey of this year. ये दोनों हमारे मेजर डेटा सोर्सेज हैं. बाकी कहीं और से डेटा है तो मैं आपको दिखा दूंगा. तो पहले थोड़ा डेटा देख लेते हैं. एंड यही आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस. देयर इज द अशोक दलवाई पैनल ऑन doubling of farmers' income. They have said that seed is a critical input and plays a vital role in improving the income status of farmers. जो ये जो कमिटी थी डबलिंग फार्मर्स इनकम की, इन्होंने उसी तरह एग्रीकल्चर के बारे में बात की है जैसे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ. सो they've spoken about inputs, then management, then production, then post production. जो हमने लाइफ साइकिल बनाया था वो सेम लाइफ साइकिल इन्होंने भी बनाया है और उसी में अपने रिकमेंडेशंस दी हैं. अब अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है या आपने पहले ढंग से प्रीलिम्स के लिए कभी भी पढ़ा है, तो मुझे बताओ ये डायग्राम देख के आपको क्या याद आ रहा है. आई हैव टॉट यू दिस बिफोर इन साइंस एंड टेक, इन एनवायरनमेंट, ऑन यूट्यूब ऑल्सो. टेल मी व्हाट इज दिस. इससे आपको एक एक्ट याद आनी चाहिए. आर यू एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ अ सेंट्रल लेजिस्लेशन फ्रॉम दिस? एंड आई हैव पर्पसफुली एक्सट्रैक्टेड द सेम स्क्रीनशॉट जो मैंने वहां यूज किया था. नहीं, ये GM सीड्स नहीं है. एक सेंट्रल लॉ याद आना चाहिए आपको. यू शुड बी एबल टू रिमेंबर अ लॉ व्हेन यू लुक एट दिस. वेरी गुड साहिल. इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, PPVFR एक्ट. इसके बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा. इट इज अ प्रीलिम्स टॉपिक. ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि फार्मर
के अलावा देयर आर सम अदर पीपल हु आर इन द सीड सप्लाई चेन। तो एक है ब्रीडर। देखो, अगर किसी भी सीड को ऑपरेट करना है, व्हाट इज द सिस्टम, पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। एक सीड है, सीड जैसे लेट्स से देयर इज अ व्हीट का प्लांट, व्हीट का क्रॉप, व्हीट के क्रॉप में ऐसे यहाँ पे सीड उगती है, व्हीट का आपने देखा ही होगा, दिस इज द सीड। यही सीड है जो हम अल्टीमेटली आटा बनाते हैं, आटे से रोटी बनती है। सो दिस इज व्हाट वी ईट एंड इट इज दिस सीड ओनली दैट वी आल्सो प्लांट, राइट। तो अब सीड हैज टू बी प्लांटेड। सो एक तो फार्मर है यहाँ पर हु हैज टू प्लांट द सीड, ओके, सो देयर इज द फार्मर। Then there are other stakeholders also. One is the breeder. Breeder is someone who is trying to make a new variety. So if they are trying to generate a new variety of something, let's say new variety of wheat, new variety of mustard, new variety of, let's say, cotton, this is the breeder. Breeder can be a company also, can be a person also. Breeder makes the new variety. This new variety, इसकी फिर seeds आती हैं. They ask the farmer to plant this seed. तो लेट्स से we'll call this a company C. तो एक कंपनी है, उसका नाम है C. इन्होंने रिसर्च करके एक नई वैरायटी बनाई ऑफ व्हीट। इन्होंने फार्मर को सेल करी ब्रांडेड सीड्स। तो इन ये सीड्स जो हैं, ये ब्रांडेड सीड्स क्यों हैं? बिकॉज इस कंपनी को बिलोंग करती हैं, दे आर अ न्यू वैरायटी। नाउ फार्मर विल सो दिस क्रॉप। जब फार्मर क्रॉप सो करेगा तो क्रॉप से सीड्स भी निकलेंगी। Farmer can sell these seeds forward. These are what? These seeds are called farm saved या farmer saved seeds. ये keywords इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अभी समझ आएगा। फार्मर ने ये ब्रांडेड सीड सो करी एंड देन ही प्लांटेड द क्रॉप, क्रॉप उगा, सीड्स बनी, फार्मर ने आगे सेल कर दी। अब ये भी तो पॉसिबल है दैट फार्मर ने दे हैव टेकन दिस ब्रांडेड सीड्स एंड दे हैव जनरेटेड अ न्यू वैरायटी ऑन देयर ओन. So this will be called farmer's variety. This will be a farmer's variety. Okay. So farmer's variety ये है and farm saved seeds है. फार्मर क्या करता है कि उन्होंने ब्रांडेड सीड्स ली, उन्होंने क्रॉप्स उगाए, उस क्रॉप में से कुछ उन्होंने सेल कर दिए टू द मार्केट, और कुछ सीड्स उन्होंने सेव करके उनको फिर रीप्लांट कर दिया. दिस दे आर अलाउड टू डू. So they took the branded seeds, they planted the crop, they sold some of the crop for produce in the marketing committee or wherever, and ये जो seeds बची इन्होंने उनको replant कर दिया. इन्हें हम कहते हैं farm saved seeds. ये भी possible है कि farmer नई variety बना ले, तो farmer को ये new variety भी sell करने का अधिकार है. They are allowed to sell these new varieties. They are allowed to sell these farm saved seeds also. They cannot resell these branded seeds. Of course, this is the law. Okay. Then this is one company C. There are going to be other researchers also. So researchers can take these varieties, whatever new varieties they have created, they can take them for initial use, and after taking them from initial use, they can develop new varieties. So they will then again become breeders. So जो PPVFR Act है, it safeguards the right of breeders, the rights of farmers, and the rights of researchers, all three. And it establishes something called a National Gene Fund, that if farmer violates any of the provisions of this law, it is the National Gene Fund who is going to pay. The farmer does not have to pay. Now this is the basic idea. अब यहाँ पर कुछ terms हैं. There is the breeder. जो breeder research करके नई variety develop करके seed देता है, these are called certified seeds. तो ये एक keyword हमें याद रखना है. अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा. सर्टिफाइड सीड्स. देन ये फार्मर के पास जाती हैं, फार्मर के पास है फार्म सेव्ड सीड्स. अब फार्मर ने सर्टिफाइड सीड एक बार खरीदी एंड उनमें से जो क्रॉप निकला उसमें से कुछ सेल कर दिया, कुछ सीड्स उन्होंने सेव कर ली. ये जो सेव्ड हैं इनको उन्होंने रीप्लांट कर दिया एंड ऐसे वो रीप्लांट करते गए. प्रॉब्लम क्या है कि जो जेनेटिक ट्रेट्स यहां पर नई सीड में थे, whatever advantages this new seed had, it is not going to continue, right? Because other genetic variations are going to come. So it is recommended that the farmer should once again get the certified seed after some time. This farmer getting certified seed again
rather than replanting whatever is on his field, अपने field का बार बार replant करने से, he should get new seeds. This idea of getting new seeds is called replacement rate. That he should replace the farm saved seeds with new seeds. Why new seeds? Because इनमें there will be genetic purity. ये genetically they will have the best quality, right? यहाँ पर it is possible that after generations of generations ये possible है कि इनकी genetic purity और जो quality थी वो खत्म हो जाए. तो इसकी कुछ recommendations हैं which I'll share कि किस time पे replace करना चाहिए. But these keywords we need to know. We need to know the keywords of certified seeds, farm saved seeds, and replacement seeds, and replacement rate. Okay. Now, certified and branded are the same. Certified because they will be accepted only after they have been tested. ऐसे ही आप तो जाके बेच नहीं सकते. It will be certified first and then it will be checked. अब in the manner of seeds आपको समझ आ गया है process क्या है. Now you have 2 minutes and you need to brainstorm. What are the issues with regards to seeds in India? Seeds एक agricultural input है. Seeds के regarding issues क्या हैं? You have 2 minutes. I am reading your comments. फिर मैं आपको बताता हूँ. You try and brainstorm. Good quality is one issue. Climate change is one issue. Price is one issue, 100%. Okay, I'll keep writing whatever you have already written. जो आप बोलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो क्वालिटी वाले इशू में ही आ जाएगा. अडल्ट्रेशन भी क्वालिटी वाले इशू में आ जाएगा. आप कीवर्ड यूज करो ना. लो सीड रिप्लेसमेंट रेट. What else could be the issue? Chalo, it's only 16 seconds. Let's see. All right. अब आप एक बात सोचो. This quality is a measure of how much private investment is coming to agriculture. If private sector is not going to invest in agriculture, the quality of seeds is going to be low. There is, because of this price, there's going to be an accessibility issue also. This is also clear. But with the quality of seeds, there are also other things that are going to happen. There are challenges like what happens because of climate change. Climate change की वजह से our requirements are changing. But जो हमारी seed making capabilities है, are they being tailored as per the effects of climate change? This is one challenge. Then the issue of seed selection. What seeds are the farmer choosing? For example, we are choosing wheat, but we are not choosing millet. Then seed replacement rate तो है, but ये क्यों है? Because जो भी नई varieties बनती हैं, उनकी acceptance बहुत low है. So the idea of accepting these new varieties is not there. So this acceptance of new varieties is a problem. Then हमने एक और चीज देखी इन्हीं varieties से linked that there were farmer varieties also. Farmer varieties को पूरे supply chain में farmer can make their own varieties and they will be more connected to the ground. But if they are more connected to the ground, इनको safeguard और store करने की हमारे पास capabilities नहीं है, right? Then
Of course, if this is the problem, like you are rightly saying, there is a demand supply gap and replacement rate कम है. So what is currently happening is that in Indian agriculture, only 35% seeds are certified seeds. 65% are farm saved seeds. And the replacement rate, of course, you cannot have a very authentic data for this. There are many studies, but it's somewhere around this. Replacement rate is only 20%. तो वही सीड वो यूज करते जा रहे हैं. अब वही सीड यूज करेंगे जो फार्म सेव्ड हैं, तो उससे क्या होगा? There will be yield issues, there will be quality issues, right? Now, if these are the issues with regards to seed in Indian agriculture, what is the way forward? What do we do to solve these problems? You tell me now. Again, आपको मैं 2 मिनट देता हूं. इन इश्यूज को सामने रखिए अपने, एंड अब आप ही सोचिए कि हर पॉइंट पे कहां व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Good. Private sector participation is needed at all stages. प्राइस कंट्रोल चाहिए बिल्कुल. टेक्नोलॉजी मिशन इज अ जनरल आइडिया, बट ठीक है. थिंक ऑन दीज लाइन्स. ये जो इशू है, कैन देयर बी अ प्लानिंग सोल्यूशन टू दिस? ये भी सोचना. कैन देयर बी अ प्लानिंग सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? Millet promotion, climate change should be incorporated in our research methodology. Increase spending in R&D is perfectly fine. चलो, आई थिंक आई स्टॉप. काफी टाइम हो चुका है. आई थिंक आपने सोच ही लिया है काफी कुछ. बट अगेन देखो, अब पहले मैं आपको वो वाली रिकमेंडेशंस बताता हूं जो अशोक दलवाई पैनल ने दी हैं, जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेंगी. सो इफ यू हैव ओनली 3 पॉइंट्स टू राइट, दीज आर द 3 पॉइंट्स यू शुड राइट. फर्स्टली, बिकॉज ऑफ दिस इशू दे से दैट देयर इज अ प्लानिंग प्रॉब्लम. हमें ये प्लानिंग ही नहीं है कि हमें कितनी सीड्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? शॉर्टेज का भी तो प्रॉब्लम हो सकता है. सो द अशोक दलवाई पैनल सेज that we need to prepare a SRP. SRP stands for seed rolling plan. So एक dynamically rolling plan होना चाहिए, जो कैसे बनेगा? This seed rolling plan, when it is made, it will be made bottom up. So first it will be made at the gram panchayat level, then at the district level, then at the state level, then integrated at the national level. अब इस चीजों में हम देखेंगे क्या क्या. हम इसमें क्लाइमेट चेंज को इनकॉर्पोरेट करेंगे. इसमें अगर कोई पेस्ट की वजह से सीड लॉस हो रहा है, वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. थोड़ी हम रिजर्व सीड्स रखेंगे just in case a problem is there, and then according to this seed rolling plan and our cropping pattern, जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न होगा उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी हुई थी बट आपने जिनको आपको याद नहीं आई, वो जो आपको यहाँ पर डेफिनेटली लिखनी चाहिए थी. हैव यू नॉट रेड अबाउट सीड विलेज प्रोग्राम, कम्युनिटी सीड बैंक? इसके बारे में आपने श्योर इकोनॉमी में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा. सो दीज थिंग्स शुड कम टू योर माइंड. सीड विलेज प्रोग्राम इज द आइडिया दैट ये जो सर्टिफाइड सीड्स हैं, they can be given at a particular subsidy, and this subsidy can be tailored to demand. So for example, अगर वो horticulture की सीड है तो उसमें सब्सिडी आप ज्यादा दो. अगर वो wheat की सीड है तो सब्सिडी आप कम दो, because we are over producing wheat and we are dependent on import in terms of horticulture. So this is the first idea. Then they say community seed bank. Why community? हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखी that farmer varieties को स्टोर करने की जगह नहीं है. So to solve this problem, we have community seed bank. Again, for the selection problem, we have a seed rolling plan. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कम है, तो दिस वी नीड टू इंक्रीज. अगर क्वालिटी की प्रॉब्लम है सीड्स में, तो R&D नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. R&D जब हम करेंगे तो वी आल्सो हैव टू थिंक अबाउट द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज
एंड उस हिसाब से हमें करना चाहिए. देन सीड सिलेक्शन का जो इशू है, इसमें वी नीड टू प्रमोट बेटर सीड्स. So we need to promote seeds like millets because they are much better than wheat for the environment and also for humans. Then if there is a price issue, you have to give subsidies. यही है seed village program. Okay, this is the idea. So ये जो recommendations हैं, ये दलवाई पैनल की हैं, right? So these recommendations definitely should come in your answer. बाकी भी और बहुत चीजें हैं, of course. जैसे आप यहां पर ये भी लिख सकते हो that they need to implement the PPBFR Act in letter and spirit. ये जो एक्ट है इसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, राइट? देन you have to ensure conservation of seeds etc. बट अगेन अगर आपको इश्यूज पता है तो आंसर लिखने में कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, राइट? नाउ क्वालिटी, एक और रिकमेंडेशन जो दलवाई पैनल ने दी है वो रिगार्ड्स टू क्वालिटी है. वो कहते हैं कि देयर नीड्स टू बी थर्ड पार्टी क्वालिटी सर्टिफिकेशन. अभी क्या हो रहा है कि जो कंपनी बनाती है सीड वही उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रही है, बट देयर नीड्स टू बी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन. ओके, नाउ अब हमने सीड्स पढ़ लिया एज एन इनपुट. दिस यू विल रिमेंबर. अब कुछ डेटा देख लेते हैं. डेटा ये है, जो डबलिंग फार्मर्स इनकम कमिटी का डेटा है वो ये है कि द क्वालिटी ऑफ सीड अलोन का कंट्रीब्यूशन इज 15 to 20% डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप एंड इट कैन बी रेज्ड टू 45% with efficient management of other inputs. So input management ही in terms of doubling farmers income plays such a big role. And they say that only 35 to 40% seeds are purchased annually from the organized sector. 60 to 65% are produced by the farmers themselves. तो ये क्या है? ये farm saved seeds हैं. Then we've read about the challenges. Sorry. We have read about the challenges of low quality seed selection, low replacement rate, lack of private investment, infrastructure नहीं है, extension services are poor. Extension services अभी हम डिटेल में देखेंगे, so we'll understand. But these keywords like certified seeds, farmer varieties, these need to come in your answer. Then the way forward in terms of seed production is to have private sector participation, have seed research capacity increase. Now this is another keyword that you need to write, which is frontier science. Frontier science is that we are using biotechnology at the frontier, जहां वो exactly use होना है. For example, in the crops at the farm level, we need to use frontier science. Then we need to talk of seed village program. ये direct recommendation है दलवाई पैनल की. Then seed rolling plan. This is also a direct recommendation जो हमें लिखना है जिसके बारे में. Then seed storage. Seed storage के लिए community seed bags are important. And seed quality में third party certification. This is something we need to do. अब यहाँ एक केस स्टडी दी है ऑन हाउ इथियोपिया यूज्ड दिस कम्युनिटी बेस्ड सीड डेवलपमेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस यूज ऑफ कम्युनिटी बेस्ड सीड डेवलपमेंट एंड मेकिंग बॉटम अप प्लान्स, दे मेड अ नेशनल काउंसिल, दे डेवलप्ड सीड आर्किटेक्चर एट द ग्राउंड लेवल, दे वर एबल टू have a well functioning seed system and improve their productivity. So if you get a question specifically on seeds, तो ये बात जरूर लिखना. Now this is all we need to read as far as seeds are concerned. अब हम next input पे चलते हैं. ठीक है, हमने सीड देख लिया. नाउ लेट्स थिंक ऑफ द नेक्स्ट इनपुट व्हिच इज पेस्टिसाइड. अब अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे कि पेस्टिसाइड्स को यूज करने में या पेस्टिसाइड्स में जनरल, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर देयर. आपको क्या क्या इश्यूज दिमाग में आते हैं एंड दिस यू शुड बी एबल टू टेल इन डिटेल, राइट? अगर आप फर्टिलाइजर हम पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजर से रिलेट करके करोगे तो ये बहुत आसान है. तो अगेन आई एम गिविंग यू नाउ 3 minutes, अ लिटिल बिट मोर टाइम बिकॉज दिस इज अ इजियर थिंग टू हैंडल. आप इश्यूज सोचो एंड थिंक इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. Somebody is asking doubling farmers income was only till 2022. One, we have not achieved that target. और इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी DFI की 7 जगह रेफरेंस है. See, the committee had given recommendations to double farmers income by 2022. बट जो उन्होंने बातें बोली, दे आर स्टिल रेलेवेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर ना. रिपोर्ट चाहे पुरानी हो, द थिंग्स आर रेलेवेंट. एंड इवन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर, एंड यू कैन चेक, आई थिंक इन 0.9.17 and 0.9.18, they have directly quoted that committee. तो 100% रेलेवेंट है. और अगर आप एक बार जाकर उनकी वेबसाइट पे देखोगे ना, व्हाट रिकमेंडेशंस दे हैव गिवन, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. उसके बियॉन्ड आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए. है वो 3000 पेज की, दैट इज द प्रॉब्लम.
ऑलराइट, देखो पेस्टिसाइड्स के जो इश्यूज है ना, वी आर गोइंग टू रीड देम इन 4 मेजर डोमेन्स। फिर हम थोड़ा सा डेटा देखेंगे, फिर आप ही मुझे उसका सोल्यूशन बताओगे, देन आई टेल यू सम एक्स्ट्रा कीवर्ड्स एंड सॉल्यूशंस दैट वी कैन राइट। सबसे पहले तो ये है कि पेस्टिसाइड जो हम यूज कर रहे हैं, द वन दैट वी आर यूजिंग, इज इट्स क्वालिटी ओके? देयर आर सर्टेन क्वालिटी इश्यूज इन पेस्टिसाइड्स, ठीक है। देन देर आर इश्यूज ऑफ ऑप्टिमम एप्लीकेशन, के ठीक है मेरे पास जो पेस्टिसाइड है उसकी क्वालिटी तो ठीक है, बट एम आई अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट एंड एम आई अप्लाइंग इन द प्रॉपर मैनर, राइट? सो दिस इज एन एप्लीकेशन इशू. So optimum application becomes a problem. Then ठीक है, I have a good quality and I'm doing optimum. I'll write optimum here. I'm doing optimum application. This is also fine that I'm doing optimum application, so this is also okay. But did I actually have other approaches to solve this problem? Things like integrated pest management, और अभी हम ये डिटेल में देखेंगे. Did I have other approaches to solve this problem? Could I have gone for organic farming or zero budget natural farming? And then the fourth issue is with regards to price. लाइक जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका प्राइस कैसे कंट्रोल हो रहा है. अब ये सारे इश्यूज हम डिटेल में देखते हैं. जो क्वालिटी का इशू है, क्वालिटी, इफ देयर इज एन इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? वी नीड टू हैव टेस्टिंग लैबोरेटरीज, राइट? हमारे पास टेस्ट करने के लिए ढंग की जगह होनी चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी सेंट्रल टेस्टिंग लैबोरेटरी है, इट इज कॉल्ड CTL. देन देयर आर रीजनल लैब्स, देन देयर आर स्टेट लैब्स. इनका जो नंबर है वो बहुत कम है और इनमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं. सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कैपेसिटी दैट वी हैव फॉर टेस्टिंग, एंड जो कैपेसिटी ऑलरेडी है उसको भी हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. देन व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम? सेकंड प्रॉब्लम है दैट who is actually governing this use. यहां पर आता है फेडरलिज्म का इशू. फेडरलिज्म का क्या इशू है? दैट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू पेस्टिसाइड्स. कोई भी नया पेस्टिसाइड बनेगा, इंसेक्टिसाइड बनेगा, या इवन पुराना है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है इंसेक्टिसाइड्स एक्ट में, और वो भी मैं भी आपको बताऊंगा डिटेल में. दैट जॉब इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द लाइसेंसिंग जॉब इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जो ग्राउंड लेवल पे लाइसेंस देना है पेस्टिसाइड शॉप्स को या पेस्टिसाइड डीलर्स को, वो देनी है स्टेट गवर्नमेंट ने. सो देयर इज अ फेडरलिज्म प्रॉब्लम. अब यहां पर ही जब हम ये रजिस्ट्रेशन का डेटा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज इमर्ज होती है. तो जो रजिस्ट्रेशन होती है नए पेस्टिसाइड्स की, दैट हैपेंस अंडर द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट. अब इंसेक्टिसाइड्स एक्ट में सेक्शन 9 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 9 क्लॉज 4, ये दो सेक्शंस हैं. 9 क्लॉज 3 इज फॉर ओल्डर फॉर्मुलेशंस जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, उनमें लेट्स से that are already available, उनको आपने रजिस्टर करना है, तो वो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट सेक्शन 9 क्लॉज 3 में रजिस्टर होंगी. एंड अगर न्यूअर आपने कोई नई इंसेक्टिसाइड बनाई एंड बेटर वे यू हैव मेड, दैट विल बी रजिस्टर्ड इन इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 9 क्लॉज 4. दिस इज फॉर न्यूअर वेराइटीज. अब डेटा क्या है हमारे पास? डेटा ये है दैट इन इंडिया द अमाउंट दैट इज बीइंग रजिस्टर्ड, यहां पर तो है 99.5% ऑफ पेस्टिसाइड्स, और यहां पर है 0.5%. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम. हमारे पास नए इंसेक्टिसाइड्स आ ही नहीं रहे. 99.5% आर बीइंग रजिस्टर्ड हियर. दिस इज द मेन इशू. आगे देखते हैं. अब बात करते हैं ऑप्टिमम एप्लीकेशन की. ऑप्टिमम एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम है कि पहली बात तो जो डीलर है,
दे डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू कि कितना पेस्टिसाइड सप्लाई करना है. एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज विद रिगार्ड्स टू द फार्मर. अब अगर मैं फार्मर के साथ प्रॉब्लम देखूं तो थ्री फोल्ड प्रॉब्लम है. फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वांटिटी की, कि फार्मर डज नॉट नो हाउ मच पेस्टिसाइड ही शुड यूज, राइट. सेकेंड प्रॉब्लम है एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन की क्या प्रॉब्लम है? लेट्स से देयर इज अ प्लांट लाइक दिस एंड यहां उसकी लीफ है. जो पेस्ट लगता है वो लगता है यहां पे लीफ के नीचे. बिकॉज फार्मर्स डू नॉट हैव दिस नॉलेज, वो पेस्टिसाइड लगा रहे हैं यहां पे ऊपर, लीफ के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं. ठीक है. दूसरी प्रॉब्लम क्या है ऑप्टिमम एप्लीकेशन की? यहीं पर ही एप्लीकेशन प्रॉब्लम ये है दैट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया, most of the and I'll show you the exact data, I'm forgetting the number, most farmers are actually applying pesticide after the pest attack. So there is a lack of awareness. So pesticide कब लगाते हैं? जब pest attack हो चुका है, not beforehand. This is a problem. Then what is the third problem with the farmer? There is a problem of personal health. They do not have personal protection equipment. पीपीई किट्स का नाम आपने सुना होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड. दे आर आल्सो नीड फॉर द फार्मर्स. अगर उन्हें पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, दे नीड टू हैव शील्ड्स, मास्क एक्सेट्रा. वो उनके पास नहीं है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन. अब आगे चलते हैं प्राइस पे. अदर अप्रोचेस पे हम डिटेल में आएंगे. प्राइस पे चलते हैं. प्राइस में क्या है दैट द सब्सिडी रेजिम is there but it is untargeted. Then we have an import problem here, right? So there are issues of price. Then anyway Indian agriculture is not a very sustainable or not a very remunerative idea, because इंडियन एग्रीकल्चर में वैसे ही फार्मर के पास सरप्लस कम है. तो डेटा यहां पर क्या दिखाता है कि 30% ही ऐसे फार्मर्स हैं जो कैश पे फर्टिलाइजर्स खरीद पाते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीद पाते हैं, सॉरी. 70% फार्मर्स आर बाइंग पेस्टिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट. तो वो लोन ले रहे हैं पेस्टिसाइड खरीदने के लिए. सो इफ दे आर टेकिंग लोन टू बाय पेस्टिसाइड, obviously the optimum application is not going to be there. And lastly, there are other approaches available that are not used enough. For example, there is an approach called integrated pest management. अब integrated pest management is also a solution to this problem. तो जब हम solution discuss करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा integrated pest management क्या होता है. But there are also other approaches like organic farming or zero budget natural farming, and these are not followed enough. So these are the problems of pesticides. ये हमें समझ आ गई. Now keep this in mind. ये अपने सामने रखो और यही problems देख के take 2 minutes, think of the problem, and इन्हीं order में try to find the solution for these problems. तो थोड़ा छोटा कर देते हैं. I hope ये भी visible होगा. इन्हीं problems को देख के अब इनका solutions बताओ. Yashika, I am proud of you because you are able to remember that female pheromone traps case study in Maharashtra. वो हमने integrated pest management मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा, and it's great that you are able to remember. Okay.
देखो, आई एम श्योर आप लोगों को ये बात तो समझ आई होगी कि अगर मैं इश्यूज ढंग से पढ़ रहा हूं एंड आई एम स्टडिंग देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, मेरे लिए सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत आसान है। सो जो भी चीजें हमें आज के बाद, इवन इफ GS3 में तो चलो मैं आपको हर चीज ऐसे ही कराऊंगा, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू इट इन सच अ मैनर कि इश्यूज और वे फॉरवर्ड हम साथ में सोचें, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग ना दिखे हमें, है ना। नाउ लेट अस ट्राई एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस। देखो, अगर क्वालिटी के इश्यूज हैं एंड यहाँ पर ये लैब्स नहीं है, तो सबसे पहले जो हमारे टेस्टिंग फ्रेमवर्क है उसको हमें बढ़ाना है, और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको हमें ढंग से यूटिलाइज करना है। यहां पर जो वैकेंसीज हैं इनको हमें फिल करना है, ठीक है। फिर देयर वाज अ फेडरलिज्म प्रॉब्लम, बिकॉज सेंटर रजिस्ट्रेशन कर रहा है और स्टेट अलग कर रहा है। तो अगर फेडरलिज्म प्रॉब्लम थी तो वी नीड टू फिक्स दिस issues of coordination, so we need better center state coordination on this issue. Then अगर हमने जो registration problem देखी थी, registration problem क्या थी, that old pesticides are only getting registered, the new varieties are not coming, new molecules are not getting developed, so we need better research and we need better extension services. extension services क्या होती हैं अभी आपको समझ आएगा, right? Then ऑप्टिमम एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है, एक साइड है डीलर और एक साइड है फार्मर। अब यहां पर एक कीवर्ड है, ये आपके नोट्स में दिया हुआ है, विच आई नीड यू टू राइट, बिकॉज ये डायरेक्टली दलवाई पैनल में मेंशन था। उन्होंने बोला है कि वी नीड टू हैव रीड द लेबल फर्स्ट अप्रोच। रीड द लेबल फर्स्ट से उनका क्या मतलब है? रीड द लेबल फर्स्ट से उनका मतलब है कि जो भी पेस्टिसाइड है उसके लेबल पे लिखा होता है कि उसे कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। डीलर भी ये लेबल पढ़े, दे शुड बी अवेयर इनफ, डीलर शुड हैव द कैपेसिटी टू रीड द लेबल कि वो फार्मर को प्रॉपर पेस्टिसाइड दे, एंड द फार्मर शुड आल्सो रीड द लेबल सो दैट ही अप्लाइज इट प्रॉपर्ली। सो दिस इज कॉल्ड रीड द लेबल फर्स्ट अप्रोच। दिस मस्ट कम व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट पेस्टिसाइड्स। देन यहां पर दलवाई पैनल ने दी है 3R अप्रोच, that when we are applying fertilizers it needs to be done with 3 R's: right dose, right manner and right time, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये जो पर्सनल इक्विपमेंट है, दिस नीड्स टू बी गिवन टू द फार्मर्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट along with the fertilizer, along with the pesticide। ये ना हो कि हम उन्हें सिर्फ पेस्टिसाइड दें, हमें उन्हें साथ में वो इक्विपमेंट भी देनी है which protects them। so this is the idea here, okay। then अब मैं आगे जाता हूं, प्राइस पे जब मैं आ रहा हूं तो आई नीड टू रेगुलेट द सब्सिडी। इंपोर्ट की प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग न्यू मॉलिक्यूल्स। अगर हम नए मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो इंपोर्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड ये 30% कैश और 70% क्रेडिट की प्रॉब्लम क्यों है? दैट आवर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन जनरल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इज वेरी लो, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर आई मीन। So we need to have better credit linkage to the agriculture sector, better price realization of their incomes। जब income better होगी तो they will be able to invest better। अब एक चीज जो यहां पर ऑब्वियस नहीं है और ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, फार्मर ओवर यूज क्यों करता है पेस्टिसाइड? लेट्स थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। Why does the farmer overuse the pesticide? They overuse because they have no protection against crop loss। अगर क्रॉप खराब हो गया फार्मर का तो अब there is no protection against it, तो उन्हें ओवर यूज करना पड़ता है पेस्टिसाइड। जब वो पेस्टिसाइड ओवर यूज करते हैं तो हमें इशू आते हैं, इशू टू द कंज्यूमर, इशू टू एक्सपोर्ट्स, वो भी हम यहां लिखेंगे। एप्लीकेशन में ये भी प्रॉब्लम है। बट अगर हमें ओवर यूज रोकना है, ये ऑप्टिमम एप्लीकेशन करानी है, तो वी नीड टू गिव देम इंश्योरेंस कि जस्ट इन केस योर क्रॉप फेल्स, you have this insurance from us that you will get the requisite amount back। So insurance also solves this problem। So the agriculture supply chain is connected। अब अदर अप्रोचेस में बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? एक तो हमने वो केस स्टडी पढ़ी थी ऑफ फीमेल फेरोमोन्स बीइंग ट्रैप्ड इन महाराष्ट्र, यूजिंग फीमेल फेरोमोन्स टू ट्रैप सर्टेन पेस्ट्स इन महाराष्ट्र। वो केस स्टडी हम यहां यूज करेंगे। बट व्हाट इज द आइडिया? आइडिया समझते हैं। आइडिया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ये है दैट देयर इज अ टॉलरेबल लेवल ऑफ पेस्ट। दे से कि एक इकोनॉमिकली टॉलरेबल लेवल है, पेस्ट को हम पूरी तरह नहीं हटा सकते। अगर हम ओवर पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी पे भी इंपैक्ट होगा। दे से दैट देयर इज अ टॉलरेबल लेवल।
इस टॉलरेबल लेवल को जो हमारे लिए इकोनॉमिकली टॉलरेबल हो एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, इस टॉलरेबल लेवल को मेंटेन करेंगे यूजिंग नेचुरल टेक्निक्स। सो नेचुरल टेक्निक से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पेस्ट, उसका जो नेचुरल प्रेडेटर है उसको यूज करेंगे। जैसे आपने गैम्बूजिया फिश के बारे में सुना होगा, और वी नो अबाउट दिस केस स्टडी। फॉर एग्जाम्पल वी विल यू डू दिस, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड विल ओनली बी एन इश्यू ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये हम सिर्फ लास्ट में यूज करेंगे। और क्यों लास्ट में यूज करेंगे? व्हेन ओनली इट गोज अबव दिस टॉलरेबल लेवल, व्हेन द पेस्ट go above this tolerable level, only then we will use this approach, otherwise we'll bring it back। and economically tolerable level है, जो economically acceptable amount of destruction है वो हम होने देंगे, but हम pesticide नहीं यूज करेंगे, because उससे बायोमैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम है, बायो accumulation की प्रॉब्लम है, उससे एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम है। so this is integrated pest management that we accept कि farm is a it is an ecosystem in itself। इसमें कुछ level of pest रहेंगे, और जो nature based solutions हैं हम उन्हीं को यूज करेंगे। So when you are writing this point on integrated pest management, always write the word nature-based solutions। ये I'm sure आपने environment में कभी ना कभी पढ़ा होगा। Okay. Again, now if we see, we have seen the issues of pesticide use and the ways to solve this issues of pesticide use in one place, है ना? तो अगर हम इस लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे तो हमें आसान लगेगा। अब हम अपने नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में पहले जीएम क्रॉप्स है, जीएम क्रॉप्स वी विल डू आफ्टर दिस। पहले हम पेस्टिसाइड्स देखते हैं। देखो पेस्टिसाइड्स में वो क्या कहते हैं कि जो क्रॉप लॉस है, ये डेटा है कि जो क्रॉप लॉस है इंडिया में ड्यू टू पेस्टिसाइड्स वो अराउंड 15 to 25% है। एंड इंडिया इज ऑल्सो अकाउंटिंग फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल डेथ्स ड्यू टू अनइंटेंशनल पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। So it is a huge problem. This data is enough for you to quote in any particular answer. Then 70% farmers purchase pesticides by credit and only 30% were purchasing it by cash। फिर मैंने आपको ये इंसेक्टिसाइड्स एक्ट का डेटा बनाया, राइट? दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द दलवाई पैनल रिपोर्ट कि 99.5% कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम द ओल्ड रजिस्ट्रेशन। नए रजिस्ट्रेशन सिर्फ हैं 0.5%। Then these are some cases of Yavatmal, cases of Kasargod, where pesticide poisoning has happened to farmers. So you can use them as case studies. Then we talk of the challenges. Challenges are fourfold: quality, optimum application, limited reach of integrated pest management, and issues of price, environmental degradation, indiscriminate use, inadequate access. जो reforms हैं वो हम discuss कर चुके हैं, that we need to have certain better testing, better regulation, price regulation, etc. अब दो तीन चीजें यहाँ पर specific हैं which we need to know. First recommendation was given by the Ministry of Agriculture Standing Committee. They said that we need to create a pesticides development and regulation authority. तो ये recommendation हमें जरूर लिखनी है when we are writing a way forward specifically in terms of pesticides. Then coordination issues हम देख चुके हैं, application issues हम देख चुके हैं. We have seen the 3R approach. Coordination why? Because there is a center state problem. Then in 2020 there was a pesticide management bill. ये पास नहीं हुआ. This was setting up a central pesticide board. And जो insecticides act है हमारी वो 1968 की है, उसको replace करने के लिए ये bill आया था. It has not been passed yet, so we need to pass this quickly. Then we need to have integrated pest management, awareness, natural farming, awareness campaigns, optimum application. जो generic pesticides हैं which are not branded, they are like medicines only. They are generic medicines and branded medicines. They are generic pesticides. They need to be made affordable and the consumption needs to be reduced. अब इस question में two more things that you must write when you get a question on pesticides. One is integrated pest management. 100% this needs to come. क्या है मैं आपको बता चुका हूं. There are economically tolerable threshold levels. इनके ऊपर जब क्रॉस करेगा पेस्ट लेवल तभी हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे. Other than this, this is a case study in Punjab. Other than this, we have to have read the label first approach. This also we have talked about. So pesticide पे question आएगा तो this we have to manage. Now,
Next thing that we have to read is with regards to GM crops. अब GM crops के बारे में इस लेक्चर के बाद भी I will have one more recorded video uploaded. I'll tell you why. Because just 4 days back, the Supreme Court has given a verdict on GM mustard. And इस बार बहुत likely है ये question. I am waiting for more editorials and more research to come on this. तो एक थोड़ी सी बात, maybe in the last lecture of agriculture which is on Saturday, हम GM crops की एक बार दोबारा बात कर सकते हैं, because ये जो verdict दी है Supreme Court ने on GM mustard, what they have said in this verdict, what is the most important point? They have said that there needs to be a national policy on GM crops. जो GM crops का regulatory architecture है, GEAC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, उसको थोड़ा सा criticize भी किया है, and it is a split verdict. So GM mustard पे question था कि should it be allowed to be commercially released? It is a 1:1 split verdict, and the issue has now gone to the 3-judge bench of the Supreme Court. तो इसके बारे में जो भी current affairs information थोड़ी add करनी है, वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. टिल देन मोर एडिटोरियल्स एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस विल बी पब्लिकली अवेलेबल. इससे पहले तक जो बात है जीएम क्रॉप्स की वो हम अभी करेंगे. राइट, सो वी विल टॉक अबाउट जीएम क्रॉप्स जनरली. अब अगर मुझे जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, देयर आर फ्यू थिंग्स आई नीड टू रीड. फर्स्ट इज द प्रोसेस एंड प्रोसीजर. दिस विल नॉट बी आस्क्ड टू यू इन मेंस, एंड साइंस एंड टेक में ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या होता है. एंड सिंस माय साइंस एंड टेक लेक्चर्स आर ऑन यूट्यूब, आप वहां पर ये बात जाके देख सकते हैं. एंड आई एम श्योर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा कि जीएम क्रॉप्स में क्या होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिकैप. जहां पर भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है, सबसे पहले वी आइसोलेट जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करने के बाद हमें निकालना है. वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो यहां पर कोई एंजाइम यूज करेंगे हम. इसका नाम आप जरा मुझे चैट में बता दो, कौन सा एंजाइम होता है यहां पर. एंजाइम जिससे मैं कट करूंगा. आफ्टर कटिंग दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट, आई एम गोइंग टू पुट इट इनटू अ वेक्टर. वेक्टर के लिए मैं दो चीज, इसका नाम रखते हैं हम ए. वेक्टर के लिए मैं दो चीजें यूज कर ले सकता हूं, बी एंड सी. ये भी आप मुझे चैट में बता दो कि बी एंड सी क्या हो सकते हैं. वेक्टर में जब मैं ये इंटीग्रेट कर लूंगा, टू इंटीग्रेट इनटू द वेक्टर आई विल यूज एन एंजाइम कॉल्ड डी. देखते हैं कितनी बायोटेक आप लोगों ने पढ़ी है मेरे साथ. इतनी मेहनत करी मैंने बायोटेक पढ़ाने में. आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत तो याद हो. जब ये वेक्टर मेरे पास आ जाएगा, देन दिस वेक्टर आई विल टेक टू द प्लांट. वहां पर ये इंटीग्रेट होगा इनटू द होस्ट डीएनए. जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो एक प्रोसेस होगी डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन. इस डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन में फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा ई. जो नेक्स्ट स्टेप वो होगा एफ. ये जो प्रोटीन होगा इससे एक पर्टिकुलर एंजाइम एमिट होगा. ये एंजाइम हमें अल्टीमेटली वो फीचर्स दे देगा जो हमें चाहिए. जैसे मान लो मुझे कॉटन में बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस के टॉक्सिन्स चाहिए जो बॉलवर्म को किल करते हैं, जिससे बीटी कॉटन बनता है. तो उसमें ये प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा. क्रिस्पर कैस9 क्यों लिख रहे हो यार? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखो. क्रिस्पर कैस9 नई टेक्नोलॉजी है. We can use CRISPR-Cas9, but is that what we did when we created BT cotton or when we were doing all of this process? So just a quick recap. This enzyme, मैंने यहाँ पर सिस्टम नहीं लिखा. CRISPR-Cas9 is not a system. मैंने एंजाइम पूछा था आपसे. This is restriction endonuclease. Then vector can be plasmid or bacteriophage. ये पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीजें. देन एंजाइम यहां पर टू ज्वाइन विल बी लाइगेज. फिर यहां पर जब इंटीग्रेट होगा उसके बाद दो प्रोसेस होंगी. डीएनए टू आरएनए विल बी ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए टू प्रोटीन विल बी ट्रांसलेशन. ठीक है, ये प्रोसेस हमसे जनरली पूछी जाती है प्रीलिम्स में. बट इन आवर नोट्स आई हैव गिवन ऑल ऑफ दिस जस्ट फॉर यू टू रिवाइज वंस. बट ये जनरली प्रीलिम्स इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो अगेन जब हम जीएम क्रॉप्स पढ़ेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए प्रोसेस और प्रोसीजर. ये हमसे नहीं पूछा जाएगा. जो हमसे पूछा जाएगा वो दो ही चीजें हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स, व्हाट इज
What are rather some issues related to GM crops? What are the regulatory architectures or regulations regarding GM crops in India? And what is the way forward as far as GM crops are concerned? ये चीज है प्रीलिम्स के लिए, ये सब पूछा जाएगा हमसे मेंस के लिए. तो यहां से शुरू होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स. आप मेरे साथ ये पढ़ चुके हैं साइंस एंड टेक में. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे एडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स बताओ. वन सेकेंड. अगेन आप लोग एक अप्रोच में नहीं सोच रहे हो. आपके पॉइंट्स ठीक हैं, बट आप अप्रोच में ट्राई टू फाइंड एन अप्रोच टू थिंक अबाउट दिस. देखो, कुछ एडवांटेजेस फार्मर को होंगे, कुछ एडवांटेजेस गवर्नमेंट को होंगे, कुछ एडवांटेजेस सोसाइटी को होंगे, कंज्यूमर्स को होंगे. तो आप उस ऑर्डर में सोचने की कोशिश करिए. हाँ बिल्कुल सही. न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ेगी फूड की. फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं. पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़ेगी. वेरी गुड. ठीक. लेट्स टॉक ऑफ द एडवांटेजेस दैट यू विल गेट फ्रॉम जीएम क्रॉप्स. क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकती है? ठीक है, पहले हम देखते हैं जो फार्म लेवल पे एडवांटेजेस हैं. अब इसको सोचना कैसे था? इसे सोचना था इनपुट फॉर्म में कि क्या क्या इनपुट्स हैं अक्रॉस द बोर्ड जो प्रॉब्लम जीएम क्रॉप सॉल्व कर सकते हैं. एक फर्टिलाइजर की इनपुट की प्रॉब्लम है. फर्टिलाइजर क्यों लगाते हैं हम? यील्ड के लिए लगाते हैं. तो यील्ड कैन बी इंप्रूव्ड. एक पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम है. पेस्टिसाइड क्यों लगाते हैं? ताकि पेस्ट रेजिस्टेंस हो, डैमेज ना हो. तो पेस्ट रेजिस्टेंस कैन बी इंश्योर्ड. एक हमने यहीं पर ही अभी अभी हमने पढ़ा कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है. पेस्टिसाइड में भी हमने देखा, सीड्स में भी हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज, बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस इसकी प्रॉब्लम है. सो दे विल बी एबल टू डील विद स्ट्रेस. स्ट्रेस कौन सा? बायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज बेस्ड स्ट्रेस. इससे जीएम क्रॉप्स डील कर पाएंगे. अब और कौन कौन से इनपुट है? वाटर इनपुट है. तो थिंग्स लाइक ड्रॉट रेजिस्टेंस, ये भी हम ला पे ला सकते हैं. अब अगर ये सारे काम जीएम क्रॉप नहीं कर दिए तो फार्मर को क्या एडवांटेज है? जो अदर इनपुट कॉस्ट है, ठीक है, जीएम क्रॉप्स की कॉस्ट ज्यादा होगी, जीएम सीड्स की कॉस्ट ज्यादा होगी, बट अदर इनपुट्स, एटलीस्ट इनपुट मैनेजमेंट विल बिकम सिंपलर फॉर द फार्मर. अब अगर फार्मर की यील्ड ज्यादा है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, बायोटिक स्ट्रेस से क्रॉप आराम से डील कर रहा है, व्हाट विल इट लीड टू? फार्म विल बी मोर प्रोडक्टिव, सो ही कैन एक्सपोर्ट. एक्चुअली आपको ये याद करना हो फार्म के लिए, तो यू कैन रिमेंबर 3 P's. व्हाट आर दीज 3 P's? एक है प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ जाएंगे, मोर प्रोड्यूस विल कम टू द फार्म. सेकंड है प्रोडक्टिविटी. दैट जनरली एक प्रोडक्शन है कि टोटल प्रोड्यूस कितना हुआ, एक है कि पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी बढ़ेगा. एंड लास्टली दे विल हैव प्राइस रियलाइजेशन.
जब प्राइस रियलाइजेशन होगा तो फार्मर को ये फायदे होंगे। हियर अब फार्मर से आते हैं हम कंज्यूमर्स पे। कंज्यूमर्स को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं बिकॉज ऑफ जीएम क्रॉप्स? कंज्यूमर को फर्स्ट एडवांटेज मिलता है दैट फूड सिक्योरिटी इज बेटर बिकॉज यील्ड इज बेटर, तो देयर इज फूड सिक्योरिटी। ये आप नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। देन द आइडिया ऑफ लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, सो जो बायो अक्यूमुलेशन का इशू था वो नहीं होता। देन एट द कंज्यूमर लेवल यहां पर वी कैन ऑल्सो डू न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट, तो न्यूट्रिशन का भी एडवांटेज मिलता है। नाउ इफ वी लुक एट द गवर्नमेंट, तो दे गेट टू एक्सपोर्ट, सो फॉरेक्स रिजर्व्स का वो मिलता है। देन अगर यहां पर पेस्ट कम यूज होंगे, फर्टिलाइजर कम यूज होंगे, तो जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है ऑन ऑल दीज थिंग्स वो होगा। फिर जो जनरली एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस है वो भी कम होगा। सो नाउ अगेन इफ आई एम थिंकिंग लॉजिकली और एक स्टेक होल्डर वाइज या लॉजिकल अप्रोच से मैं सोचूं, तो देयर इज नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ पॉइंट्स आई कैन जनरेट। अदर देन टीचिंग यू GS3, इट इज आल्सो माय जॉब टू टीच यू दिस। ओके, अब लेट अस कम टू व्हाट आर द इश्यूज। हमने एडवांटेजेस तो देख लिए, हाँ बहुत एडवांटेजेस हैं जीएम क्रॉप्स के, बट देयर आर सम इश्यूज ऑफ जीएम क्रॉप्स। अब ये इश्यूज आप ब्रेनस्टॉर्म करो। अगेन थिंक ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। आई विल गिव यू 2 minutes। अगेन प्लीज थिंक इन अ पर्टिकुलर अप्रोच, है ना। सारे स्टेक होल्डर्स को मैप करो। फार्मर भी स्टेक होल्डर है, जो कंपनी ये बनाती है जीएम क्रॉप्स, दे आर ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, कंज्यूमर्स आर ऑल्सो अ स्टेक होल्डर। ऐसा नहीं है कि इनके सिर्फ एडवांटेजेस हैं। अब लेट अस थिंक ऑन व्हाट आर द इश्यूज। सबसे पहले अगेन वहीं चलते हैं, लेट्स गो टू द फार्म। Firstly, in terms of farmers, then can be socio-economic marginalization. यहां पर एक कीवर्ड आई वांट यू टू यूज, genetic haves and have nots. Not everybody can afford the seeds that are coming through this, right? So genetic have and have nots का issue है। Then, and this is related to the companies, हमने अभी एक replacement rate वाला issue पढ़ा। अब अगर आप एक कंपनी में काम करते which was making GM crops, what would you want? You would want that the farmer should replace the seed every time, right? Or you would want that every time new purchase is done, otherwise how will your business run, right? तो यहां पर दो चीजें हैं, and I'm sure you've heard about this. One is trait fees.
that they charge royalty on these new GM crops that they make. One is terminator gene. What is terminator gene? Terminator gene is कि मैंने GM क्रॉप लगाया, फर्स्ट जनरेशन में तो उसकी बहुत फायदे हुए, सेकेंड जनरेशन में क्या प्रॉब्लम हुई कि जो एडवांटेजेस थे वो अपने आप खत्म हो गए, एंड दिस वाज पुट इनटू द डीएनए थ्रू अ टर्मिनेटर जीन. कि फर्स्ट जनरेशन में जब आप सीड प्लांट करोगे देन यू विल गेट द एडवांटेजेस, बट जो उसकी प्रोजेनी होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, दैट विल नॉट हैव दोस एडवांटेजेस. ओके, then the environment is a stakeholder. If you look at the environment, this is an irreversible thing. आप रिवर्स नहीं कर सकते जीएम क्रॉप्स को, राइट? आपने एक बार कर दिया, उनकी पॉलिनेशन शुरू हो गई, देन देयर इज अ बायोडाइवर्सिटी इशू. दे माइट रिप्लेस द एक्चुअल क्रॉप दैट इज देयर. जो वाइल्ड वैरायटी है उसको वो रिप्लेस कर देगा. फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन कैन adapt to the environment better than normal cotton. So it is a biodiversity problem. Then if you look at it from the environment perspective, there is also a contamination problem. Then we come to the technical issues of it. The technical issues have to do with the effectiveness. जैसे for example it has been seen that BT cotton की जो yield है after 2-3 years, पहले 2-3 साल तो कोई दिक्कत नहीं हुई, but after 2-3 years the yield started to decline. So this became a problem. Then even when we look at the investment that has to go around GM crops, it will require more irrigation, at least in some cases. So that will also create an environmental problem. Then when you look at the people who are consuming it, if humans have to consume it, some GM crops have the gene of antibiotic resistance in them. और ये मैं आपको अभी समझाता हूं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन क्यों होती है वहां पर, राइट? देन व्हाट अबाउट इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स? वी डोंट नो. किसी भी चीज के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को स्टडी करने का क्या तरीका है? उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखना, बट आप 10 years तो वेट नहीं करोगे टू सी द इफेक्ट ऑफ इट, राइट? So there are long-term effects also that are going to happen. Then in terms of environment, you can also think of the fact that certain non-target organisms will get affected. आपने biopesticide बना दिया, आपने GM crop बना दिया to target bollworms, but it is also going to affect non-target beneficial organisms. So this does not sync with the idea of integrated pest management. Then अगर farmer आगे जाके इनको sell कर दे, this is probably a governmental issue. Then there is also an issue of intellectual property rights, right? अब let's talk about this, कि antibiotic resistance क्यों है GM crops में कहीं कहीं. If we look at the process and procedure, ठीक है, ये process and procedure हमें याद है. मैंने ये gene of interest isolate करी, I put it in the vector. Once I put it in the vector, then I put it in the plasmid and etc. This is a set of bacteria. यहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं. I have to integrate the gene of interest. This is the gene of interest. I have to integrate this into this bacterial colony, and this is not happening at a macroscopic scale. You cannot say this is the gene of interest, this is the bacteria, and this I am inserting. This is happening at a very microscopic scale. If this is happening at a very microscopic scale, I need to check whether the integration has happened. So I need a marker to check whether the integration has happened. Let's say that there are 5,000 bacteria here, and I put 5,000 copies of the gene of interest here, and I try to integrate it using restriction endonuclease and ligase. But ऐसा तो नहीं होगा कि 5,000 की 5,000 genes 5,000 to 5,000 बैक्टीरिया में सब में इंटीग्रेट हो जाएगी. At some places it will get integrated, the some places the reaction will fail. It is ultimately a biological process. How will I know in which bacteria the gene has actually gotten integrated? तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि along with this gene of interest, let's say this is the gene from BT cotton, this is the Cry1AC gene against bollworms. This is the gene I want to put. Along with this, I will put another gene. This gene is of
resistance to streptomycin. Streptomycin is an antibiotic. So streptomycin resistance की मैंने gene ली and cry1AC gene ली. I put these two genes together. I made 5,000 copies and I put it in this bacterial colony. And ये number भी बहुत arbitrary है. How do I check if there are 5,000 bacteria here? Bacteria are themselves dividing constantly. So I don't know what this number is. And I don't know what this number is. I just made a lot of copies of the gene cry1AC. I attached it to streptomycin resistance and I put it in a bacterial colony. I don't know. There can be billions of bacteria here. Now in some bacteria, this gene will come. After the integration process, some will have this gene and some will not. But I am only interested in the ones that actually have this gene. So what will I do after this? I will treat this entire colony with streptomycin, which is an antibiotic. If the integration has happened, अगर gene integration हो गई है in bacteria में, तो streptomycin से they will be resistant and they will not die. And अगर आपको याद हो, it is actually the bacterial plasmid that gives antibiotic resistance. तो अगर तो मुझे ये पता चलता है that I put streptomycin, these part of bacteria, this much, do not die. They are safe. That means integration has actually happened. But these ones will die. So the useless ones, जहां पर integration नहीं हुई वो मर गए. And now I have a new colony of bacteria. This new colony of bacteria only has bacteria where the integration has happened. But integration check करने के लिए I had to put this gene. Now I will put this gene in cotton. Cotton I am not eating, so it's not a problem. But if I was eating this plant, let's say it was GM wheat, then will I be comfortable eating this gene of streptomycin resistance? This is the consumer problem of GM crops. And there is no other way other than this resistance gene to check. There are new methods now coming. New methods like fluorescence markers, कि वो bacteria fluorescent दिखने लगते हैं जहां पर ये integration हो गई होती है. But this is the most common method. So there is a problem of antibiotic resistance. So these are the issues. Now, what is the way forward? Way forward अगर मुझे देखना है GM crops के लिए, of course I can solve these issues. But there is a specific way forward that was recommended by the Economic Survey of 2017. In the Economic Survey of 2017, they said 4 specific things about GM crops. They said that you should only allow GM crops that, 1, do not have terminator genes. You can allow it in non-food crops. Then it is not a problem, right? Then you can allow it in the places where it is leading to actual disease resistance. Because it is leading to less fertilizer use. And then you can allow it in places where the shelf life is getting increased so that it helps in our export issues. Now, whenever you are writing a question related to GM crops, there are some keywords that I want you to always put in your answers. Right, I'll just show you the keywords and then I'll show you the notes for GM crops also. यहाँ हम GM crops से शुरू करते हैं. There are some keywords I want you to write regardless of what question is there related to GM crops. First is right to know. Right to know means I need to be aware what I am eating or what I am wearing. Everyone needs to be told. There needs to be a label saying that yes, this is a genetically modified product that you are consuming, and you should have the absolute right to know whether you are consuming a GM product. Second is precautionary principle. Precautionary principle हम environment में पढ़ते हैं. What is the meaning of precautionary principle? The meaning of precautionary principle is that when I am not aware, मुझे नहीं पता that this particular event will cause climate change, will cause climate damage or not. I am not sure. The science is not clear yet that whether this particular event will cause climate damage or not. In this case, I should show precaution until I am absolutely not sure. So rather, I am absolutely sure that there is going to be no environmental damage. Till then, I should not use the GM crop, right? So I should be precautious. I should show caution till I am absolutely sure. अगर science unclear है, don't use the GM crop. Show precaution. Then the
Cartagena Protocol on Biosafety. This needs to come in your answer. Okay, and ये मैं explain नहीं कर रहा हूँ. I'm sure you have read this in environment. Cartagena Protocol needs to come in your answer. Then, eco-sensitive zones. In eco-sensitive zones, you cannot use GM crops because in ecologically sensitive areas like Western Ghats, biodiversity is anyway a challenge. Then, in your notes further, the idea is about the only commercially cultivated crop till now is GM cotton, which is BT cotton. GM mustard per discussion hai, that I've already told you we'll talk about in detail. एक बार I need to read a little bit more about that. Some examples are given here. Dhara mustard hybrid 11 is GM mustard, but इसके बारे में हम बात करेंगे. Then this method of the process is given. Although you do not need to read this. Process आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा. This is the regulatory mechanism, and ये भी मैं environment में पढ़ा चुका हूँ, science and tech में भी पढ़ा चुका हूँ. Regarding GEAC and MOEFCC, again you don't need to read in detail. हाँ, we will need to read in detail in context of GM mustard. That I will tell you in the last class. थोड़ा और पढ़ लूँ मैं उस बारे में. Then these are the benefits: productivity, price realization and production, 4x yield, etc etc. ये हम देख चुके हैं. Then there are certain risks भी हम देख चुके हैं कि क्या क्या issues हैं. Then the way forward as said by economic survey and other things like regulatory framework, independent research, etc. Right? So this is what we have to read about GM crops. Pesticides we have done, GM crops we have done, seeds we have done. अब थोड़ा आगे चलते हैं. This is integrated pest management. Read the label first. ये हम कर चुके हैं. Next, let us talk about agricultural mechanization. ये भी तो एक input है. Mechanization से ही हम connect करेंगे the problems of agricultural credit and agricultural investment. ठीक है. अब एक we have read 3 or 4 topics so far. Let's take a break for 5 minutes. 5 minutes थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. Let's take a break for 3 minutes, and after this break, we'll continue with agricultural mechanization. Mechanization के बाद we will read extension. Extension के बाद we are going to read credit and investment. I hope you guys are comfortable with this approach of the class where I ask you to think first. मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा है because this helps in you also brainstorming with me. I hope this is okay. Okay. Then we'll continue like this only. जितना ऑफलाइन का काम हो सकता है, like this is what I would do in an offline class. So जितना वो emulate हो सकता है यहाँ पर, I think this is the best way to do it. Of course the participation is up to you. थोड़ा तो discipline आपका भी लगेगा, but I'm assuming that at least more, like I'm assuming at least 50% of you or maybe more are doing it. Slight edge in agriculture. Edge वगैरह कुछ नहीं है. It's just I have read a lot. Internal security में भी I read a lot. Here also I have read a lot. मैं almost पूरा economic survey पढ़ चुका हूँ खुद से इस बार का. जब आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा वहां भी आपको रियलाइज होगा. Economic survey also, this is very interesting. It's just if I keep reading, it's going to be fun for you.
यशिका मैं क्लास के बाद बताता हूँ ये मतलब आई कैन एक्सप्लेन टू यू लाइक इफ यू वांट एन इंस्टेंट आंसर. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें से यूरिया इज आउट ऑफ द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम. दिस इज द रीजन. आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं क्लास के बाद बताता हूँ. जो पहली चीज है सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ लैंड इज अंडर लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स. वहां पर प्रॉब्लम क्या है? इट इज नॉट अंडर लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स बिकॉज ऑफ प्लानिंग. इट इज अंडर लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इरिगेशन. 100% अभिषेक. हम यहाँ पर भी तो अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे 2017 कोट किया है. इकोनॉमिक सर्वे उस साल का रेलेवेंट रहता है. अद्वित सिंह, इतना सब पढ़ के याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट. याद कराना मेरा काम है. आई होप याद हो रहा होगा. वी आर डूइंग एवरीथिंग लॉजिकली. जैसे अभी हम एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन पढ़ेंगे, लॉजिकली पढ़ेंगे. देयर इधर इज फाइन. आपको पॉइंट्स दिमाग में आने चाहिए, राइट? पॉइंट्स दिमाग में आने चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. अरे मैं कर लेता हूँ मैनेज अद्वित. इट्स ओके. आई होप यू, आप लोगों को याद हो रहा है ना? आपको याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. लाइक आई होप दिस, आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सेट्रा ताकि आपको याद बेटर हो. This is the only reason. I can start teaching on the board directly. It's not a problem. The thing is that आपको याद होना चाहिए. Anyway, चलिए अब एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन देखते हैं. देखो अगेन, मैकेनाइजेशन अगर हमसे पूछा जाएगा, हमारे पास वैल्यू ऐड करने के लिए थोड़ा सा डेटा होना चाहिए कि यार एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन का इस टाइम पे इंडिया में स्टेटस क्या है. इसके अलावा हमें चाहिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन. व्हाई आर वी नॉट एबल टू डू. एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस तो कुछ नहीं है एज सच एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन की. व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स वी फेस. ठीक है. एंड देन वी नीड टू रिमेंबर अ वे फॉरवर्ड. बाई वे फॉरवर्ड हम जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे और जलवायु पैनल पे. ठीक है. प्रत्युष इज सेइंग इज इट ओके टू बी रीडिंग एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया और यहां से सॉल्व नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा. दिस इज माय गारंटी. इसके बियॉन्ड कुछ खास बचेगा नहीं. आप देखो ना, वी आर गोइंग इन सच अ लॉजिकल वे. हमने इनपुट पढ़े. अब बताओ लैंड पे व्हाट फर्दर क्वेश्चन कैन वी हैव. हमने पढ़ तो लिया लैंड रिफॉर्म के बारे में जो पढ़ना था. फ्रॉम दिस डेटा यू शुड बी एबल टू राइट एन आंसर, है ना? अब पहले मैकेनाइजेशन का डेटा देखते हैं कि इंडिया में मैकेनाइजेशन का स्टेटस क्या है. सो दिस इज 3 years बैक इकोनॉमिक सर्वे एंड दिस डेटा यू कैन कोट बिकॉज इस साल इकोनॉमिक सर्वे में इस पर बात ही नहीं हुई है. लास्ट ईयर भी इकोनॉमिक सर्वे में इस पर बात नहीं हुई. सो इवन द प्रीवियस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे स्टे रेलेवेंट because it is a government data. What have they said? That 40 to 45% agricultural machinery है India में, and this data they have also taken from NABARD. That's okay. You can just write as per economic survey, India has 40 to 45% agricultural mechanization. But we read this as whole data, right? So agricultural mechanization में this is the broad idea that okay, agricultural mechanization is 40%. बट वी नीड टू रीड द प्रोसेस. प्रोसेस क्या है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें वेरियस स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम सीड्स लेंगे, प्लाउइंग करेंगे, फिर सीड्स को प्लांट करेंगे, फिर ग्रोथ होगी, वहां पर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होगी, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन होगी, देन फाइनली हार्वेस्टिंग होगी और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग होगी. व्हाट दे हैव सेड इज दैट मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मैकेनाइजेशन इज हियर. So 70% is done in seed bed preparation. Seeds की preparation करने के लिए what is the mechanization you need? You need tractors. So tractor का use इंडिया में बहुत ज्यादा है relatively. Tractors are being used. यहां पर mechanization है, but जो last steps हैं of production, things like harvesting, threshing, कि उसको काटना, फसल को काटना, फसल को निकालना, फिर उसको segregate करना, थ्रेश करना, वहां पर मैकेनाइजेशन बहुत कम है. सो 40% इज द एवरेज, बट मोस्ट ऑफ द मैकेनाइजेशन इज हैपनिंग वेयर, एंड यू कैन सी दिस डेटा हियर.
Most of the mechanization is happening in seed bed preparation. Then sowing may you see the number of the decline is huge. And finally harvesting and threshing least mechanized. But if you look at it, productivity depends on all of these steps. If you have very good seed bed preparation, very good sowing, very good planting, but in the end, if you are unable to harvest the crop using machines, what is the point? This is the first issue of agricultural mechanization in India, and this is a study by the Indian Council of Agricultural Relations. Now, then, in terms of crops, highest mechanization is for wheat. For wheat fields, the mechanization is 65%. But in other areas, 20% for sugarcane, 30% for rice, very low for cotton. So specifically also there is a imbalance. Now, the Standing Committee on Agriculture said that again, mechanization levels, since this is an estimate also, you can't have a absolute number. इन्होंने number दिया 47%. You can use anything 40, 45, 47. इतने से फर्क नहीं पड़ता because even the reports are giving this data. But यहाँ पर जो important data है Standing Committee का, उन्होंने क्या कहा है? That you compare it to other countries. China has about 60%. Brazil is almost reaching 75%. And it will take us 25 years. If we go at the current rate, it will take us 25 years to get to the point where we are competing with other emerging economies in terms of agriculture mechanization. तो हम बहुत पीछे हैं. This is the data and this data should reflect in your answers. ठीक है. अब बात करते हैं. डेटा हमने देख लिया. We have enough points. GS3 में डेटा का वैल्यू भी बहुत है. अब let's talk about what are the advantages of agricultural mechanization. अगर मेरे को agricultural mechanization करनी है, I am able to do it. What are the advantages I am going to get? Now these advantages, again, you have to brainstorm in 2 minutes and please think about the entire supply chain of agriculture. Agriculture में क्या क्या होता है, कहां कहां मुझे फायदा होगा, and I've almost already told you the answer. नहीं यार, Vivek saying that mechanization leads to loss of jobs is like saying that computers lead to loss of jobs. Mechanization also creates more jobs, no? अरे गिव मी स्पेसिफिक पॉइंट्स. आप सोचो एज अ फार्मर, व्हाट डू यू हैव टू डू? पहले आप सीड लगाओगे. सीड लगाने में कोई एडवांटेज होगा? फिर फर्टिलाइजर लगाने में कोई एडवांटेज होगा? फिर टाइम बचेगा आपका. फिर आपके लैंड में कैन यू नॉट हैव मोर एफिशिएंसी? देन लेबर कॉस्ट विल बी सेव्ड, दिस यू हैव टोल्ड. देन क्रॉपिंग इंटेंसिटी विल बी इंप्रूव्ड. आपको वीड भी तो हटानी है वहां से. Weed reduction will happen automatically because machines will be able to do it better. Then your yield will also be better. Yeah, anyway, चलो मैं बताता हूं. देखो, let's say मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे सीड्स लगानी है, right? अब मुझे once I have to put the seeds here, okay? If the machine is doing it, won't it lead to seed savings also? Why seed savings? Because अगर मैं हाथ से सीड लगा रहा हूं versus a machine is doing it, a machine will be more efficient. It is designed for this process. After this, I have to apply fertilizers. I have to apply pesticides. Again, this process will become more efficient. Right? So process will become more efficient, more saving will happen. Then I will also be able to do this faster.
So I will save my time. I will save on my labor cost, like you rightly pointed out. I will also be able to improve my cropping intensity. What does cropping intensity mean? That let's say ये farm है, इस farm पर आप 100 crops लगा सकते हो या 200 crops लगा सकते हो. If you are doing it manually, maybe you are able to put only 100 crops there. But if it is being done by a machine, the amount of crops that can be put, it will have a better process and it will be more optimized. अब ये तो आई crop लगाने तक की बात. When I'm maintaining the crop and producing it, even in terms of weedicides or weed removal, my job will be saved. Then in terms of pesticide application, I also thought of the challenges that farmers face. But if I am mechanizing the process, the immediate safety threat to the farmers becomes less. Then in terms of yield, my yield will increase. Okay, I will have much more yield once this happens. Correct? Then correct. So it is actually more precise farming throughout the value chain. Okay, there is no limit to the amount of benefits you can write here. If mechanization is so good, why are we unable to do it? What are the constraints as far as agricultural mechanization is concerned? And this now I want intelligent answers to, because आप पढ़ चुके हो ये चीजें. What is the biggest constraint here? And we have read about this already. I've given you the biggest hint. It is not cost. Cost is not the biggest constraint here. Yes, the biggest constraint is fragmentation of land. Cost high क्यों लग रही है farmer को? ये investment है. This is investment. This is investment in his own agriculture. If he invests more, he will get more money. You remember we talked of economies of scale. अगर मेरे पास 10 एकड़ का फार्म है तो भी मुझे एक ट्रैक्टर चाहिए. अगर मेरे पास 1 एकड़ का फार्म है तो भी मुझे एक ट्रैक्टर चाहिए. 89% of land holding in India is small and marginal. This year's economic survey data. Small and marginal means less than 2 hectare farm. So less than 2 hectare farm in 89% of the places. What does it mean? It means that there is going to be a constraint. This is the biggest constraint, fragmentation of land holding. Then, of course, there is a financial constraint, but that is emanating from this only. चलो, anyway, let me tell you. देखो, सबसे पहले है that even if I am getting the machine, there is a or rather there is a farm issue. What is the farm issue? Firstly, the land is fragmented. I own only half hectare of land. Then it makes no sense for me to get one tractor because I don't have a marketable surplus. I anyway cannot invest in my agriculture, and that tractor also needs some area to function. Then, whatever is my demand versus whatever is the supply of these machines, there is a mismatch. Thirdly, ये मैंने आपको बता भी दिया था अभी, we are going towards tractorization, but we are not going towards mechanization. So tractor तो आ जाता है, but only in one end of the supply chain we are using the machines, not here. Okay. Then to operate this on the farm, I need skills. It is not something that everyone can operate. हम लोग नहीं चला सकते हैं tractor. Then the machine that I get on the farm, वो कभी खराब भी होगी. So there will be a service issue. So serviceability, quality of machines,
This is a problem. Now let's talk of the financial constraint. Of course there is a high cost, but nobody is asking the farmer to pay the cost all at once. Ideally, what do you need to have good farm mechanization? You need good agricultural credit, but the credit is missing. This is the second problem. If you don't have agricultural credit, you cannot get these machines because उसके पास ability ही नहीं है credit लेने की. और credit लेने की ability भी क्यों नहीं है? Because the land is fragmented. What collateral does he use? Then whatever subsidies have been given, subsidy is not reaching the right place, and there is a concept of custom hiring centers. अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा. Custom hiring centers are not being used properly because there is also an awareness issue. Then there is a governance issue. There is a policy constraint. The policy constraint does not allow for proper distribution of farm machines because of, let's say, problems in DBT or problems in our implementation of these policies. And also there is an awareness issue. People are not aware that this problem can be solved, right? There is also a manpower issue, like we've written here in terms of skills. We can write a skilled manpower issue is also there. Okay, these are the issues that we have with regards to farm mechanization. अब have we done something so far? अगर हम किसी चीज को पढ़ेंगे लॉजिकली, हमने डेटा देख लिया, बहुत अच्छी चीज है, but these are the reasons we are unable to do it. So have we done something so far? Has the government done something so far to solve this problem? ये देख लेते हैं. Now here the same things are written, but some data is added. So that is why I say as soon as the class finishes, please read some of this. Okay, ये एक बार read कर लिया करो, बस आपको याद पक्का हो जाएगा. Then what has the government done? We have a submission on agricultural mechanization. This is talking about expanding farm mechanization access, promoting custom hiring centers. अब custom hiring centers में, अच्छा, the words you need to write here is mitigating the adverse economies of scale. See, this is academic language. मैं आपको पढ़ा सकता हूं कि economies of scale नहीं है. तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक जगह हो where you can hire the tractor as a service, or you can hire the thresher as a service. You don't have to buy it. इतना surplus है आपके पास कि आप एक बार यूज करो और वापस दे दो. Custom hiring center, you hire it as per your customized needs. ये मैं आपको पढ़ाने के लिए I can simplify it for you. But when you are writing the answer, you need to write, the language should look like this: mitigating the adverse economies of scale. Okay. Then equipment hubs, which are high tech and promote high value farm equipment. All right. There is also a farms app, और ये हम पढ़ चुके हैं E-Tech में. This is a farm machinery solutions app, right? So what it does is it links all the things like farm machinery banks, custom hiring centers, high tech hubs, etc. Then there are two industry-led initiatives. So these are private initiatives. One is Gold Farm, one is J Farm Services, and both are again promoting that people should get customized hiring. They should get these machines as a service. You take them and you give them back. Like for example, for Lanco is there for furniture. Similar idea is there here. Up. This is what we have done so far, but problem to solve nahi hui. So what does the government say? The government, or rather what does the Ashok Dalwai panel say? It says make agricultural machine banks and custom hiring centers and have targeted distribution of these custom hiring centers. Make agricultural machine banks at the district level. At the state level, make service centers. So you get machine banks are there. You can, they can house the cost intensive machines, and from there people can hire as per their customized needs. And at the state level there are service centers in case machine kharab ho jati hai. Then they are saying that you need to hire mechanized services. Don't buy the machine, hire the mechanized service. अगर low cost agriculture हो रहा है तो
तो ये चीज नहीं हो सकती कि वो मशीन खरीद ले. Then they say that you need to have contract farming. When contract farming will be there, in contract farming, the private sector will itself supply it, right? Then monitoring and utilization is there, government support needs to be there, etc. Now, this is the conclusion I want you to use directly from the economic survey of this year. What does it say? Indian agriculture is now set to transition from production to income-centric profession. This needs to invite new technology so as to operate the mechanization sector on the principle of enterprise. So we are not looking at agriculture as subsistence, agriculture as business, as enterprise. They are not farmers, they are agripreneurs. So you need to use these keywords: agribusiness, agripreneur. ये keywords आपको यूज करने हैं when you are writing questions on credit, on investment, etc. Okay. Now it says agricultural mechanization has become essential to modern agriculture and it contributes towards higher productivity. अब बात करते हैं एक्सटेंशन सर्विस की. We have seen this. अब what is agriculture extension service and why is it called extension service? कोई पहले तो मुझे ये बताओ. Why is it called extension service? आपने ये टर्म तो पहले सुन रखा होगा. नहीं, it is not agri as business. I'm sure ये तो yes no तो बता दो if you have heard agriculture extension before. नहीं, it is connected to R&D in agriculture, I'll tell you. So let's say this is an agricultural university. Where research is happening with regards to agriculture. Research and development is happening here. Agri extension service क्या होती है? And अगर आपने नहीं सुना है, this is very worrisome. मतलब देखो, अगर आपने आज तक, if this is the first time you're reading agriculture, this is okay. If you have read agriculture before and not heard about this is worrisome. Okay, but अब सुन लो. Agriculture university में, let's say research and development is happening. It cannot stay in the university. It cannot stay here. From here, I have to extend it to the farm. So I need to have a lab to land connect. This is the idea of agricultural extension service. Lab to land connect. तो जो R&D और एग्रीकल्चर में है उसको मुझे एक्सटेंड करके फार्म तक लाना है. एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू R&D. Whatever benefits or whatever I am doing outside the farm to supplant or to increase agriculture's productivity, to do better agriculture, those services have to extend to the farm. This is agricultural R&D. Okay, agricultural extension service. So lab to land connect. Okay. Ab, why is agricultural extension important? Or rather, let's talk of the definition. पहले this, ये जो definition मैंने आपको बताई है, this is the traditional definition. So traditionally, it was thought that extending the services of research and development from the lab to the land is agricultural extension. This is the traditional definition. What is the new definition? New definition is that it is not merely enough to extend, because this is tokenistic. ये तो टोकन हो गया कि मैंने यहां से लाके यहां रख दिया.
right? This extension actually has to serve the purpose of doubling farmers income. तो जो अशोक दलवाई पैनल था, उन्होंने इस पे एक पूरी रिपोर्ट रखी है, आई थिंक इट्स वॉल्यूम 6 और वॉल्यूम 7. उन्होंने कहा है दैट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्चुअली नीड्स टू सर्व द पर्पस ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, एंड इट नीड्स टू बी ऑन द एंटायर सप्लाई चेन. Why are we doing agriculture extension or agriculture research only in seeds? Should we not do agricultural extension and research as far as post production marketing is concerned? तो उन्होंने कहा है that it needs to be done through the entire supply chain, not just here. So it is a supply chain based idea. So if you get a question on agri extension, you need to mention this, that the new definition says that doubling farmers income throughout the supply chain. Now हम देख लेते हैं डेफिनेशन. सी दिस इज एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. यहां से एक्सटेंड करके वी हैव टू गेट टू द फार्मर. एंड दलवाई पैनल ने कैसे डिफाइन किया है? एम्पावरिंग सिस्टम ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन 1, नॉलेज 2, टेक्नोलॉजी 3, स्किल्स 4, farm management practices 5, across agricultural subsectors and along all aspects of the supply chain. मैं ऐसे ही नहीं बार बार आपको एग्रीकल्चर सप्लाई चेन बोलता हूं. So as to enable the farmers to realize higher net income from their enterprise on a sustainable basis. So if you cannot actually, if you're doing research and उससे अगर farmer income improve नहीं होती तो उसका कोई point नहीं है. This is what the panel says. They include 3 things in this. Overarchingly, it is guidance, training and resources. उसके अंडर ये सारे कंपोनेंट्स हैं. दिस इज व्हाट इज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन. अब डेटा देखते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे. सो जो इंडियन काउंसिल ऑन रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च है, उन्होंने रिलेशन है, उन्होंने क्या कहा दैट 70% ऑफ रिसर्च एंड एक्सटेंशन बजट इज एलोकेटेड टू क्रॉप्स ओनली. बट एग्रीकल्चर डज नॉट मीन क्रॉप्स. ये हम देख चुके हैं फर्स्ट क्लास में. It means animal husbandry also. It means horticulture also. It means sericulture also. Right? There are so many things here. Then 89% is coming from the public sector and 11% is coming from the private sector. R&D expenditure. जो R&D में जो expenditure हो रहा है, research and development में, private sector is not doing its bit. प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो कर रही है. ऑफ कोर्स दिस एक्सटेंशन सर्विसेज, यूनिवर्सिटीज, साइंटिस्ट, एक्सटेंशन ऑफ स्किल्स, extension of training, of guidance, of resources can be done privately also, can be done publicly also. Publicly हो रहा है mainly, privately it is not happening. Then agriculture extension intensity. जहां भी वर्ड इंटेंसिटी का मतलब है, इट विल मीन पर हेक्टेयर. सो इसका क्या, ये क्या कहता है कि फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर इट वाज ₹37 per hectare in this year and now it is ₹95 per hectare in this year. So from this year to this year, the amount of money that is being spent per hectare, that has increased. But who is spending this money? It is being spent by the public sector, not by the private sector. Then अब यहां पर हुई रिसर्च, हेयर रिसर्च हैपेंस, बट साइंटिस्ट खुद तो नहीं जाएगा फील्ड में. सो यू नीड एक्सटेंशन वर्कर्स. जैसे अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा हो तो आपने बैंक मित्र पढ़ा होगा, राइट? दीज आर पीपल हु गो टू अनबैंक्ड रूरल एरियाज एंड टेक द सर्विसेज ऑफ द बैंक देयर. सिमिलरली वी नीड एक्सटेंशन फंक्शनरीज. इंडिया में इस टाइम पे 1.2 लाख नंबर ऑफ एक्सटेंशन फंक्शनरीज हैं. सो वी हैव ओनली 1 एक्सटेंशन वर्कर ऑन 1156 फार्मर्स. ये रेशियो ठीक नहीं है. दिस इज अ बैड रेशियो. वी नीड टू हैव मच मोर एक्सटेंशन वर्कर्स इन इंडिया. अब ये डेटा पढ़ के ही हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो समझ आ गए होंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, राइट? अब एक डेटा और मैं आपको बताता हूं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जो इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च है उसका एक सैंपल फील्ड है, लाइक इट हैव अ सैंपल प्लॉट.
ओके, जहां पर वो रिसर्च करते हैं। जो इस प्लॉट की यील्ड है जो इस प्लॉट की, दैट इज एक्चुअली 6 times द यील्ड दैट इंडियन एग्रीकल्चर हैज। इसका मतलब पॉसिबल है इंडियन एग्रीकल्चर की यील्ड को 6 times बनाना, राइट? सैंपल प्लॉट में 6 times यील्ड है। प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसर्च है, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, दैट इज नॉट कमिंग टू द फार्म। दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर। सो इंडिया में जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्या है? देयर इज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, देन देयर इज अ डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन, दिस डीओई हैंडल्स एवरीथिंग, देन देयर इज मैनेज, देन ईईआई, समिति एंड आत्मा, इनकी फुल फॉर्म्स नीचे लिखी हुई हैं। आत्मा शायद आपने पढ़ा हो। आत्मा इज देन कनेक्टेड टू आईसीएआर, एसएयू एंड केवीकेस, राइट? सो ये ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क यू नीड टू नो, तभी हमें समझ आएगा। मैनेज हियर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, देन देयर इज एक्सटेंशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बिलो इट, ये 4 है इंडिया में। देन देयर इज समिति, सो दिस इज स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट फॉर एक्सटेंशन एंड दीज आर ऑब्वियसली इन एवरी स्टेट। एंड आत्मा इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा is then connected with कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR is Indian Council on Agricultural Research, SAU is State Agricultural University. So this is the connecting organizational framework of agricultural extension in India. ये extension framework, if you get a specific question on extension, you need to draw this. Otherwise इसको draw करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब हम agricultural extension पढ़ेंगे, when we have to read agricultural extension, हमसे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। First is व्हाट इज इट, होता क्या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये हमने देख लिया। सेकंड, इससे रिलेटेड कुछ डेटा हमें चाहिए था, ये हमने देख लिया। अब वेयर इज इट यूजफुल, ये आप मुझे बताओगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको पता चल गया है। देन व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, अभी हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसी से रिलेटेड हमें कुछ रिकमेंडेशंस होंगी कि व्हाट कैन वी डू to solve this problem of agricultural extension, क्योंकि वो फार्म तक पहुंच नहीं रही है। 1 we have done, 2 we have done, 3 करते हैं। So now you tell me, I hope you've understood that where in agriculture will agricultural extension service help me? You have 2 minutes. Ronak saying I usually attend lectures recorded, just came to say this, and उसके आगे कुछ लिखा नहीं है उन्होंने, टेंशन दे दी है मुझे, पता नहीं क्या लिखने वाले हैं। आई होप इट्स समथिंग डिसेंट ओनली। गुड शैलजा, यही सुनना था मुझे। एट ऑल लेवल्स, ये सोचने वाली बात है ही नहीं। ऐसा कौन सी जगह है जहां ये एक्सटेंशन हेल्प नहीं करेगी? यार, इट इज नॉट टेक्नोलॉजी, इट इज गाइडेंस, इट इज ट्रेनिंग, इट इज रिसोर्सेज। यू टेल मी एट व्हाट स्टेज विल गाइडेंस, रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग नॉट हेल्प? ऐसी कौन सी जगह है जहां ये हेल्प नहीं करेगा? फ्रॉम even the pre-planning stage, or rather sorry, the pre-planting stage where I am thinking of what to plant, वहां पर भी मुझे गाइडेंस चाहिए हो सकती है। then I have to plant, यहां भी मुझे गाइडेंस चाहिए हो सकती है, राइट? उसके बाद I have to harvest, यहां मुझे गाइडेंस चाहिए हो सकती है। उसके बाद I have to do storage, लॉजिस्टिक्स, यहां मुझे हेल्प चाहिए हो सकती है। एंड फाइनली आई हैव टू डू मार्केटिंग। सो फ्रॉम व्हाट टू प्लांट, हाउ टू प्लांट इट, हाउ टू हार्वेस्ट इट, हाउ टू स्टोर इट एंड हाउ टू मार्केट इट, कि अभी मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं दैट इट वुड बी बेटर इफ यू वेंट टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर। देन प्लांटिंग में इट वुड बी बेटर इफ योर प्लांटिंग was done in this particular manner, if you did intercropping, mixed cropping, etc. Then it would be better if you did your harvesting like this.
It would be better if you went for storage and logistic facilities like this, and it would be better if you did marketing like this, right? ये सारी चीजें ही तो एक्सटेंशन सर्विसेज हमें हेल्प कर सकती हैं. देयर इज नो प्लेस वेयर दिस विल नॉट हेल्प. करेक्ट. अब अगर ये इतना ही अच्छा है, इफ इट इज सो गुड, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स? ये आपने एक्चुअली सोचना है. क्यों नहीं पहुंच पा रहा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन टू द फार्म्स ऑफ इंडिया? आई गिव यू 3 minutes. आराम से सोचना. थिंक एट एवरी स्टेप. I want you in this time, I don't want you to just give whatever point comes to mind. फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करो. Try to make a framework in your head at this point. कि क्या हो सकता है? What are the things that can possibly be there? जस्ट ट्राई अपनी नोटबुक पे ट्राई टू मेक अ डायग्राम. मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं. देखो, अभी मैं कुछ हिंट नहीं दे रहा. दिस इज लेट्स से द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. दिस इज द फार्म. यहां पर कुछ चैलेंजेस होंगे, यहां पर कुछ चैलेंजेस होंगे, यहां से यहां पहुंचने में कुछ चैलेंजेस होंगे. फिर यहां पर ओनली वन एक्टिविटी इज नॉट हैपनिंग, मल्टीपल एक्टिविटीज आर हैपनिंग. है ना? सोचना सीखो. 20 पॉइंट निकल के आने चाहिए यहां से. ठीक. अगर आपको एक अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलानी होती, लेट्स से यू वर द वन हु हैड टू रन अ गुड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड नीड? You would need good people, humans. You would need funds. You would need infrastructure. And you would need a good management. तो ये चारों ही इश्यूज हो सकते हैं ना. ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज, वेकेंसीज हैं, प्रमोशंस नहीं हो रहे, सैलरी ढंग से नहीं मिल रही, फंड्स नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट, infrastructure is not good, management is top down, it is not there to have a conducive environment of research, is not actually sponsored. Okay, ये issues हो गए at the agricultural university level. अब यूनिवर्सिटी में काम करके तो बात बनेगी नहीं. I have to take the research to the farm, so there can be issues in linkage, there can be issues in terms of, ये हम देख ही चुके हैं कि एक्सटेंशन वर्कर्स नहीं है. ये है, दिस इज द वे फॉर यू टू जनरेट पॉइंट्स. अब फंड्स में लिखो दैट प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इन्वेस्टिंग. अब जहां वो रिसर्च कर भी रहे हैं, आप यू टुक द रिसर्च
some research was happening here. That research was constrained by some humans, funds, infrastructure and management. You took the research here. Even the linkage was constrained by lack of linkage to the farm industry, academia linkage नहीं है, research relevant ही नहीं है, then extension workers नहीं है, research relevant भी है तो भी वहां ले जा नहीं सकते. You are doing research, हमने क्या देखा था, that you are doing it only at the crop level. What about the various other things that are happening here? You are not doing research on post-production things. You are not thinking about storage. You are not thinking about marketing. You are not thinking about linkages. You are not thinking about post-harvest infrastructure. यहाँ पर नहीं हो रही research. Research हो रही है what to plant and how to plant it. And let's say आपने research कर भी ली, अच्छी कर ली, ये सारी चीजें आपने solve कर ली. The person who is here, यहां पर अवेयरनेस जब तक नहीं होगी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे नई रिसर्च. सो अब देखो, इज देयर एनी लिमिट टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स आई कैन मेक, राइट? सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स शुड हैव कम. एंड जब मुझे इसका वे फॉरवर्ड लिखना है, लेट्स से आई वांट टू नाउ राइट वे फॉरवर्ड फॉर दिस सेम प्रॉब्लम. ओके, आई कैन राइट लाइक दिस ओनली, नो, that I need a better human resource policy. Private sector needs to invest more. Infrastructure needs to be developed at this level. Management needs to be bottom up and scientists need to be involved. Also, अब एक चीज मुझसे भी मिस हुई यहाँ पर. Throughout this entire architecture, there is going to be some policy you have, no? आपकी एक पॉलिसी होगी, आप कुछ गवर्नेंस करोगे आप. सो ह्यूमंस, फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट. आई नीड बेटर लैंड टू लैब कनेक्ट. आई नीड मोर एक्सटेंशन वर्कर्स. आई नीड बेटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस. आई नीड मोर फार्म अवेयरनेस. अब यहां पर आई नीड टू फोकस ऑन विमेन फार्मर्स. उनकी नीड्स अलग हैं. आई एम नॉट रिसर्चिंग ऑन देम. I need to research across the supply chain on post-production things also, on these issues also. अब अगर मुझे डेटा नहीं भी पता, if I get a question on agricultural extension, I will write 10 points in issues, 10 points in way forward. All of them are going to be relevant. The problem is going to be I don't have data. Data आपको दे चुका हूं मैं, right? अब ये तो है for your understanding, for you to remember, right? I hope this is clear, and this is what I want you to develop. Once you develop this, it's never going to be a problem in reading anything, and logical है सब कुछ, है ना? अब I want you to then add this. This gives you 1 mark more. This data here, this gives you 1 mark more, and your language needs to change. Language needs to be like this, जो यहाँ लिखी है. Capacity building, recommendation में ये नहीं कि more human resources needed, no. Capacity building, curriculum revision, institutional linkage, catch-up grants, rejuvenating Atma, making a national ranking framework for these universities, focusing on the work of Directorate of Extension, focus on agri-business, Krishi Vikas Kendra and public-private partnership. Extension services need to have convergence. Integrate KVK with Atma. Gender empowerment. Similarly, there can be challenges in private services. Private में क्या होगा? That they are focusing more on profit. They are only focusing on their own particular development. Larger areas में available नहीं है, investment कम है, etc. etc. Similar thing you write for private, right? अब have we done something for this? हमने agricultural extension देखा, right? We said that yes, it is a good thing. What is it we understood? It is a very good thing. It can be used across the value chain. There is some data. There are some constraints. अब ये जो diagram था ना, ये this I expect कि आप अपने notes में मेरे साथ बनाते हो, राइट? एंड ये चीज ऐसी नहीं है जो आप एक बारी में सीख जाओगे. सो आई एम गिविंग यू सम 1 सेकंड में, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, आप ये बना लो ताकि आपको याद हो जाए. एंड जो मैं आपको टाइम देता हूं टू थिंक, उसमें दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू.
राइट? ये याद करके नाउ यू नीड टू ऐड द डेटा टू इट. हो सकता है हर जगह आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा, बट आपको 10-12 पॉइंट याद रहेंगे. 3 or 4 of them are going to be brilliant points from the data that you remember. है ना? अब have we done something for agriculture extension? Yes, we have a national mission on agriculture extension technology. इसमें there are sub missions on agriculture extension, sub mission on seed and planting material, sub mission on agricultural mechanization, sub mission on plant protection and plant quarantine. Then we have कृषि विज्ञान केंद्र. Then ये तो हम पढ़ चुके थे. Things like M किसान, किसान कॉल सेंटर, किसान टीवी चैनल. अब किसान टीवी चैनल बनाने का क्या लॉजिक है कि किसान टीवी चैनल पे यू टेल देम अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हाट टू प्लांट, व्हाट नॉट टू प्लांट, एक्सेट्रा. You make a farmer's portal, so you extend what is happening in the university to the farmer. Okay, then NGOs are also doing this job. This is then agricultural extension. Now this topic is complete. And जब मैं agriculture के बारे में broadly सोचूंगा, I need to think about this. ठीक है? अब पढ़ते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रह गई है दो. क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर. तो पहले पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट, फिर पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है? ओके. अब एज फार एज एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज कंसर्न्ड, ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट को कहा गया है दैट इट इज एन ओवरराइडिंग इनपुट. इससे क्या समझ आया आपको? Overriding input means that again, like technology, credit you can use everywhere. Across the chain, credit can be used. So it is an overriding input. हर जगह यूज हो सकता है क्रेडिट. तो बहुत वैल्यूएबल भी है, राइट? The cycle of production in the farm, it starts and ends with agricultural credit. So at the starting stage, when you need mechanization, when you need fertilizers, when you need pesticides, you need credit. At the end, when you need cold storage, when you need transports and logistics, again you need credit. And this credit has an impact across the value chain. Yahan finally, when there is price realization, you pay back the agricultural credit. Okay. Ab it is said that a 1% growth, अगर 1% ग्रोथ हो जाए एग्रीकल्चरल क्रेडिट में, तो 0.29% ग्रोथ हो जाती है सीधा एग्रीकल्चरल जीडीपी में, विच इज ह्यूज रिटर्न है ये जीडीपी के टर्म्स में. जीडीपी इज अ मच बिगर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके. अब प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चरल क्रेडिट की? जस्ट टॉकिंग ऑफ द डेटा, इंडिया में 89% फार्मर्स आर marginal. Okay, their land is less than 2 hectares. अब आप मुझे बताओ, in giving agricultural loans, in giving agricultural credit, what are the challenges or what are the constraints? Again, I'm going to give you 2 minutes. Think, क्या इश्यूज है? एंड एकदम से चैट में लिखना मत. थिंक अबाउट इट. आपको लोन देना है एक फार्मर को, आप दे दोगे? और नहीं दोगे तो क्यों नहीं दोगे?
अरे निश्चल, why is there unwillingness of private institutional sources to give credit? PSL norms नहीं है ना? PSL norms, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी होती है ना एग्रीकल्चर सेक्टर को. ठीक है, देखो जब चैलेंजेस सोचने हैं तो दो तीन तरह के चैलेंजेस हैं. पहले तो है कि if I look at when a loan has to be granted, when a loan has to be granted to the farmer, there are certain issues. Firstly, the land is fragmented. If it is fragmented land, they do not have proper collateral. Then they do not have land rights or land records. A record of land rights is not there, है ना? लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है, डेटा ही नहीं है उनके पास टू शो. देन ये तो तब है जब आपके पास एक्चुअली लैंड हो. देयर आर आल्सो लैंडलेस लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट्स. हमने पढ़ा था टेनेंसी रिफॉर्म के बारे में. टेनेंसी रिफॉर्म्स में व्हाई वर वी ट्राइंग टू गिव देम ओनरशिप? बिकॉज उनके पास लैंड की ओनरशिप है ही नहीं, तो वो क्रेडिट लाएंगे कैसे? हो क्रेडिट नहीं लाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. देन अब ये तो हुआ फ्रॉम द फार्मर साइड. अगर मैं लोन देना चाहता हूं तो इस रीजन से मैं नहीं दूंगा. दिस इज व्हाट आई कैन सी. देयर इज आल्सो अ नोशनल प्रॉब्लम. द नोशन इज दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे बैक नहीं हो पाएगा लोन. ये आप लोगों ने भी, कई लोगों ने लिखा कि एनपीएस की प्रॉब्लम है, नोशनल प्रॉब्लम है, दैट दे विल नॉट बी एबल टू पे बैक. Now this is also a research, वो उमा कपिला वाली बुक में this research was done and conclusively disproven. NPA in agriculture sector is same as the NPA in the rest of the country. कोई ज्यादा स्पाइक नहीं है, बट हमारा नोशन है. देन अगर मैं फार्मर के साइड से सोचूं, एक तो फार्मर के पास ऑप्शन है इनफॉर्मल लेंडिंग का. वहां पर मनी लेंडर है, उसे लगता है कि मैं मनी लेंडर से ही ले लेता हूं. व्हाई? बिकॉज द बैंक विल आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स. मनी लेंडर बिना डॉक्यूमेंट के दे देगा. देन फार्मर डज नॉट हैव एक्सेस टू द बैंक. एंड देयर इज आल्सो, एंड आई वांट यू टू राइट दिस कीवर्ड, फियर ऑफ कोर्सिव एक्शन. दे फियर दैट ऑन द साइड ऑफ द फार्मर देयर इज गोइंग टू बी कोर्सिव एक्शन. वो दे विल, इफ दे आर अनेबल टू पे बैक, सीधे उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी. तो फार्मर आल्सो डजंट गो फॉर फॉर्मल लेंडिंग. अब इससे हो क्या रहा है? What is the implication of all of this? The implication of all of this is that there are 89% marginal farmers in India, but they have less than 50% of the credit. तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिट डिस्पर्स नहीं हो रहा. क्रेडिट डिस्पर्स हो रहा है इंडिया में. इट इज नॉट बीइंग डिस्पर्स्ड equitably. 89% of the people have less than 50% of the credit. Then there is a regional imbalance. जहां पर फार्मर्स रिच हैं वहां पर तो ठीक है, बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, वहां पर एग्रीकल्चर क्रेडिट डज नॉट सर्व एवरीवन हु इज देयर. ओके, देन एग्रीकल्चर क्रेडिट इज बीइंग टेकन फॉर व्हाट पर्पस? दो तरह का क्रेडिट हो सकता है ना. एक है कि मैं क्रॉपिंग सीजन के लिए क्रेडिट लूं, दैट आई टेक क्रेडिट फॉर द शॉर्ट टर्म, कि मुझे ये वाली अपनी पर्टिकुलर, आई हैव टू कंप्लीट दिस ईयर्स क्रॉपिंग साइकिल, सो आई टेक शॉर्ट टर्म क्रेडिट. मुझे सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए क्रेडिट चाहिए, तो मैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट लूंगा क्योंकि वो मुझे हर साल करना है. सो आई विल से मुझे 1 साल का लोन दे दो. इस 1 साल के लोन के बाद आई विल कम बैक एंड आई विल पे यू बैक बिकॉज नेक्स्ट ईयर अगेन आई विल नीड दिस लोन. एक है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, कि मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, मुझे 10 साल का लोन चाहिए. Short term credit in India is 65%. Long term credit is only 35%. तो क्रेडिट तो जा रहा है, but it is not getting dispersed properly. Then the share of the cooperative banks. कोऑपरेटिव बैंक, आप श्योर आपको पता है अगर आपने इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है, कोऑपरेटिव बैंक्स का शेयर डिक्लाइन कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स का शेयर बढ़ रहा है. अब कमर्शियल बैंक्स तो हर जगह है नहीं रूरल एरियाज में. व्हाट डज दिस मीन? That agriculture credit is actually going to big farmers. So it supplants this data. Then
एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो दलवाई पैनल की रिपोर्ट में लिखा था, उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चरल द एग्रीकल्चरल क्रेडिट दैट इज गोइंग, मोस्ट ऑफ इट पीएसएल नॉर्म्स हैं। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट तो जाना है ना, यू कैन नॉट डू विदाउट एग्रीकल्चरल क्रेडिट। बट ये जो पीएसएल नॉर्म्स हैं, राइट, इसमें नॉर्म्स अलग हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की, दे आर नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड and most of the credit is actually going between the months of Jan to March. Now this is very worrisome because Jan to March is not a planting season. If you were a farmer, when would you ask for the loan? Before you started planting. तो या तो लोन जून में जाता या लोन नवंबर में जाता, लोन जा रहा है जैन टू मार्च में। That means clearly there is diversion of agricultural loans to non-agricultural sector, नहीं तो हो ही नहीं सकता। And why in March? Because March 31st, when your financial year ends, you have to clear your PSL targets. So diversion हो रहा है towards the end of the year. This is the anomaly and challenges of agricultural credit in India. ठीक है? Correct. Just to show in their books. Solution बताओ अब. What is the solution to this problem? यहीं से solution बता दो। एक्चुअली हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट मैं ना आपको एक दो चीजें यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। विल स्टॉप दिस राइट नाउ। आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, जनरली दिस विल हेल्प अस इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, राइट, काफी हेल्प करेगा हमें। दो तीन चीजें हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फार्मिंग इन जनरल? फार्मिंग में प्रॉब्लम क्या है? प्लीज स्टॉप द चैट एंड लिसन। हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं क्लास को, मैं क्रेडिट से ही कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट टाइम, डोंट नीड टू वरी। क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, 10-10 मिनट के टॉपिक हैं। इसके बाद विल रीड अबाउट प्रोडक्शन। तो हम पहले फूड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, फिर हम एमएसपी। एमएसपी इस बार बहुत लाइकली क्वेश्चन है बिकॉज देयर वाज अ डिमांड। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां से आपको ना एपीएमसी का भी लॉजिक समझ आएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द फार्म सेक्टर? देखो, फार्म सेक्टर में it is essentially a buyer's market. आपने फार्म पे कुछ प्लांट किया, ठीक है, आपके पास प्रोड्यूस आई। ये जो प्रोड्यूस है, राइट, ये द प्रोड्यूस दैट यू हैव हियर, you have to now sell to the buyer. But the problem with your produce is what? He can wait. Buyer can wait. He can say, okay, नहीं खरीदता आपसे, right? But you have to sell, because if you don't sell, let's say within 1 month, your produce is perishable. So it is a buyer's market. इनकी चॉइस है, and there is also excess produce. एक्सेस प्रोड्यूस है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो आपको सेल करना ही है। यू हैव टू सेल एट दैट मोमेंट। सो द फार्मर्स आर व्हाट? इन दिस कंडीशन द फार्मर्स आर एक्सप्लॉइटेड। देयर इज नो जॉइंटनेस इन द फार्मर्स, दे आर वल्नरेबल। सेम चीज क्रेडिट में है, जब जॉइंटनेस नहीं है, राइट, इट इज अ क्रेडिटर्स मार्केट। मैं देना चाहूं लोन मैं दूं, मैं ना देना चाहूं मैं ना दूं, राइट। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दिस इज वी हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। मैं बस आपको एक, आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट डिड द गवर्नमेंट से? दैट द सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विल ओनली हैपन इन वन प्लेस, which is the agricultural product marketing committee. सिर्फ एपीएमसी में ही सेलिंग होगी। Why? Because otherwise if we make it a buyer's market, they are going to be exploited.
एपीएमसी इज अ कमिटी जहां पर फार्मर्स भी हैं, राइट? तो सिमिलर चीज अगर हम क्रेडिट पे सप्लांट करें, तो क्रेडिट पे गवर्नमेंट क्या कहती है? इट इज अ क्रेडिटर्स मार्केट. So the farmers need to come together. So they need to make cooperatives. They need to make farmer producer organizations. They need to make joint liability groups. इस पे काफी डिस्कशन है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में. ओके, these things need to be done. ताकि ये जो generally if you look at the farm sector and you look at the marketing of the farm sector, it is something which is always favoring the person who has to give the money, because सामने जो प्रोड्यूस है वो एक्सेस में है और सामने जो प्रोड्यूस है वो पेरिशेबल है. They have a time problem and they have an excess problem. This is the basic thing I want you to remember. Next time जब हम पढ़ेंगे, I might upload a lecture tomorrow as a recorded lecture. उसमें थोड़ा सा मैं आगे तक पढ़ा दूंगा. I don't want to, because एक class obviously I missed on Saturday. Most likely I'll upload a lecture tomorrow. वो प्लीज देख के आना थर्सडे तक, और थर्सडे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? This time and excess problem is also there in, चलो छोड़ो, we'll discuss this later. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. अब एक बार जल्दी से विद इन 2 मिनट्स रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा? वी स्टार्टेड विथ सीड मैनेजमेंट, सर्टिफाइड सीड्स, फार्म सीड्स, रिप्लेसमेंट रेट, हमने इस बारे में पढ़ा. देन वी रेड अबाउट quality of seeds as an issue, low seed replacement rate, private investment was not there, price as an issue, climate change as an issue, seed selection was an issue, and solutions to the seed problem. Correct? Now, then we read about seed rolling plan, then we read about pesticides के क्या-क्या issues थे. 4 heading में हमने पढ़े: quality, application, price and other approaches, and इनके क्या-क्या solutions possible थे. This we have read about. Then we read about ये insecticides act etc. Then GM crops में we read about the procedure of GM crops, advantages, issues, regulations and way forward. Then what are the issues further in at the farm gate, environment पे, tech level पे और human level पे GM crops के क्या issues हैं? What did the economic survey of 2017 say about it? If we talk of farm mechanization, उसका हमने data देखा, राइट? कंस्ट्रेंट्स देखे फार्म मैकेनाइजेशन के. फिर हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करी, व्हाट डज इट मीन. देन वी रेड अबाउट व्हाट इज इट, डेटा, वेयर कैन इट हेल्प एट ऑल स्टेजेस, व्हाट वर द कंस्ट्रेंट्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंड अगेन दिस इज रिलेटेड टू जीएम क्रॉप्स. एंड देन वी रेड अबाउट एग्रीकल्चर क्रेडिट. हमने देख लिया व्हाई क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट, हमने क्रेडिट का थोड़ा डेटा देख लिया, एंड हमने इश्यूज ऑफ क्रेडिट देख लिया. नाउ वी विल कंटिन्यू विथ क्रेडिट खत्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट खत्म करेंगे. आई जस्ट राइट ऑन द बोर्ड, आई विल बी अपलोडिंग अ रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर दीज टॉपिक्स ताकि आप ये समझ लो. एपीएमसी आई वांट टू टीच यू लाइव बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्रेडिट वी हैव टू रीड, कोऑपरेटिव सेक्टर वी हैव टू रीड. कोऑपरेटिव सेक्टर देख रहे हो आप? आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स केम व्हाई? बिकॉज फार्मर्स मार्केट इज एन आइसोलेटेड मार्केट. वी वांट देम टू कम इन यूनिजन. Then we have to read about investment in the agriculture sector. Then after investment in the agriculture sector, we have to read about crop insurance. In topics पे, in 4 topics पे I'll upload a recorded lecture and it will be up by tomorrow evening. आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है that ये तो आप ये देख के आओगे, you watch this, and when we start the next class we will start it with a question. It's not a previous year question. मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उससे पता चल जाएगा कि अभी तक आपने कितना याद किया. ओके सचिन, आई डू इट यार. ऐसा कुछ है जो आज तक प्रॉमिस किया और ना किया हो? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर करंट अफेयर्स थोड़े और कंपाइल हो जाए. वील डू इट, डोंट वरी, है ना? ये सारी चीजें, दिस लेक्चर विल बी अप टुमारो.
ये देख के आना. थर्सडे को जब हम स्टार्ट करेंगे, we'll start with this question and you have to write it live with me. संकल्प टेंशन मत लो. GS3 तो यहाँ, इफ यू आर हेयर, पढ़ते रहो बस. आई नो अगेन शायद पढ़ना मुश्किल हो रहा हो इस टाइम पे, बट वील मैनेज. प्राची, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग सिक्योरिटी ओनली फॉर वन रीजन, बिकॉज जो अभी करंट अफेयर्स हैं वो मैं कवर करना चाहता हूँ. तो अगस्त में जो करंट अफेयर्स हैं, अभी बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, देयर हैव बीन अटैक्स इन JNK एक्सेट्रा. वो आई वांट टू कवर ऑल ऑफ दैट, एंड कुछ खास बचा नहीं है आपका सिक्योरिटी में ना. वेरी स्मॉल पेरिफेरल टॉपिक्स आर लेफ्ट. सिलेबस का कोई टॉपिक एज सच इज नॉट लेफ्ट. ऑलराइट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी टुडे. आई नो दिस वाज अ डिफिकल्ट डे. मिलते हैं थर्सडे को एंड वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू. हैव अ गुड इवनिंग. बाय बाय.